Good morning and welcome to my annual talk that I give on eating. So the program name is How to Eat in Order to Thrive. Okay. So first, let us understand the context. That why do I do these sessions? So I do these sessions normally at the start of the year for my students. So I'm a health coach. I'm a certified health coach from the US and I stay in Bombay and it's about my journey with healthy eating by holistic living started with my own illnesses. So I had few autoimmune conditions as a child. I had ankylosing spondylitis, I had Crohn's disease, I had a zero sperm count, and many other conditions I had. And just because of right eating and right ways of living, I would say holistic living, I was able to reverse everything. And it's been 17th year now. I am off all the medication. So that like I transmuted my pain into purpose. And since 2012, I've been helping people with similar conditions and now taken it to another level, joining Sharan and being a teacher with Sharan. So this time I kept it open for all because I wanted everybody to benefit out of this. Okay, so before we dive into the session, let me first ask you one question. What do you understand by thriving? Because I have used the word thrive. I have not used the word that how to eat in order to reverse your disease or how to eat in order to survive. So what is your understanding of thriving? Anybody? You want to unmute and speak? There is no textbook you answer, okay? Yeah, you Mukesh? excel you excel in every areas of your life, Mm-hmm. be it physical, be it mental, be it emotional, be it spiritual. So I mean, in whatever activity actions you do, and you are in the moment, and you excel in it, and you are able to give your best. Yes, absolutely. We should clap for Mukesh. He's bang on target that yes, you are able to excel in whatever you do, not only reverse your illness, not only lose your weight. Normally, people come to me for losing weight, for reversing their illnesses. My first question is, करोगे क्या? What will you do after reversing your illness? वो तो ठीक हो ही जाएगा. I can guarantee that. वो तो 100% if you eat the right foods and if you um, improve your दिनचर्या 100% बड़ी से बड़ी बीमारी रिवर्स होती है. There is nothing in the world that cannot be reversed except a few things which are genetic and which are since birth, but everything can be reversed. So very important to understand the context of this session. So before we do any activity, you should set an intention. ओके, कोई भी काम हम करते हैं इंटेंशन सेट करना चाहिए. तो आज अपना इंटेंशन ये मत रखिए कि मुझे कोई बीमारी रिवर्स करनी है इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, या पर मुझे वेट लॉस करना है उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ. यहाँ पर आइए आप टू बिकम योर बेस्ट. सो इन सिंपल वर्ड्स थ्राइविंग मीन्स बीइंग योर बेस्ट. एंड बेस्ट हम कब बन सकते हैं? व्हेन यू पुट द बेस्ट फ्यूल इनटू योर बॉडी. ओके. सो अब आपका जो शरीर है, आपको बेस्ट बनना है, बट उसके अंदर आप जंक डालेंगे तो हाउ विल इट ऑपरेट? Hmm? Obviously, it will not operate at its fullest potential. Yeah? So I'm going to start my PPT now. So this is the context of the session. Be your best. That's my mantra of life. That whatever I do. So as I said, a few months ago, I joined Sharan again. And Sharan stands for Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature. Here we believe that food is medicine. That whatever दवाई हमेशा पिल्स के रूप में नहीं आती है, खाना भी एक तरह से दवाई है. एंड we are a part of nature. Reconnection to animals and nature means that we are also part of animal kingdom and we are a part of nature. This is my this thing, the program name, How to Eat in Order to Thrive. This is the fourth edition of my program, and this time it's completely new. No information has been shared before. Okay, so before we start the session, the actual presentation, let me throw up another question to you. What does food mean to you? Think about it, and you can write down in your journal also. If anybody wants to unmute and speak, आप unmute करके speak भी कर सकते हैं. हिंदी, English, Gujarati, any language is fine. What does food mean to you? A source Um, of so energy. okay. Varsha is saying source of energy. Okay, anything else? और क्या खाने को सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है आपके? It Come on, is it uh, was. it is not only Nutrition. the food that we eat, it is also the data that we consume, and everything in surrounding that Fine. we absorb. Absolutely. So it's about food, air, light, oxygen, so many things, data, information, so many things we consume. Very right, Mukesh. Thank you for sharing. So Mukesh को इतना चीज दिमाग में आ गया. वर्षा is saying energy, विभूति, yeah. Uh, like of late, I've started looking at food like prasadam more. Uh,
So just thinking it like that differently. Beautiful. So Vibhuti is telling you food is like a prasad. Excellent. Anybody else? Such a beautiful thought. Yeah, good morning. For me, food is a nourishment not only for my body but also for my mind. Because whatever thought I put in my food, whatever information I put in my food that I eat, I consume. It's not only for my body, it's for mind also. I believe that. Beautiful. So she doesn't only eat for her body, for the cells, but for her mental state also. It affects the mind. Jaisa an, वैसा मन. Beautiful. Anybody else? Thank you, Ekta, for sharing. और क्या आता है खाने को सोच के सी खाना फूड हैज टेकन ओवर प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ वेदर इट्स बर्थ वेदर इट्स डेथ इवन आफ्टर डेथ और आफ्टर डेथ क्या होता है जो ये होता है दिस थिंग श्राद्ध वगैरह होता है उसमें भी खाना ही खिलाया जाता है आपको याद करके ओके वेदर इट्स अ बर्थडे whether you are in hospital whether you're in a cinema hall whether you are in a car whether you are in a mall whether you are anywhere food has taken over our life food emotions भी होते हैं ना इमोशंस सो मेनी इमोशंस आर एसोसिएटेड तो कोई खाना अगर हम देखते हैं एंड हम बचपन से वो खाते आ रहे हैं तो हमें कैसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है सो फूड इज ऑल्सो इमोशंस फूड इज कल्चर ऑल्सो हाँ sports there is such a big cultural impact on the food choices that we make so food is practically बोलते हैं ना कि it's not just we are eating for nutrition or just for energy or just for mind or just for body every answer was right definitely it was right but you have to understand that food encompasses everything इसके लिए क्यों बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट कि आप जो खा रहे हैं आप वही बनने वाले सो वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन थिंक अबाउट इट इन डिटेल आज कई जगह छुट्टी भी है बिकॉज ऑफ मेनी फेस्टिवल्स जस्ट थिंक अबाउट इट व्हाट फूड मीन्स टू यू बिकॉज अनलेस यू बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट यू वोंट बी एबल टू मेक अ रिलेशन विद फूड वी हैव अ रिलेशनशिप विद फूड ऑल्सो लाइक वी हैव विद अवर spouses or bosses or friends so you build a relationship with food next question why do you eat food anyone हम खाना क्यों खाते हैं hmm? anyone wants to answer new people no not the same people who answer yeah dr aman yeah मम्मी wants to speak. yeah आंटी हम खाना क्यों खाते हैं एनर्जी नहीं रही काम करने की. अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मतलब खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं आंटी बोल रही है कि यस डेफिनेटली कैलोरी इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड सर्टेन कैलोरीज बिकॉज वी बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज आल्सो ओके एनर्जी के लिए खाते हैं और क्यों खाते हैं खाना चलिए Yes, for सोचा किसी ने survival. सर्वाइवल ओके सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है डेफिनेटली अगर नहीं खाएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे हम वेरी ट्रू बेसिक नीड ऑफ द बॉडी रूम इज सेइंग यस इट इज अ बेसिक नीड ऑफ द बॉडी टू सर्वाइव ओके व्हाई एल्स कम ऑन अभी तो बट मेरे को टेक्स्ट बुक आंसर्स मिल रहे हैं हम और क्यों खाना खाते I also हैं think नेहल because नेहल सॉरी most करीना या can you hear me? यस I think most of our choices for food, fortunately or unfortunately, are dependent on the taste. The choices, Oh, same thing. the taste. टेस्ट सो वी ईट फूड फॉर टेस्ट वेरी राइट या फूड शुड बी टेस्टी इनफैक्ट बोलते हैं ना कि खाना देख के अगर मुंह में पानी नहीं आए तो वो खाना हमें खाना नहीं चाहिए राइट इट इज राइट टेस्ट इज नॉट अ बैड थिंग okay so don't misunderstand that healthy food cannot be tasty okay I also eat food for taste if it's not tasty I don't eat at all if it's not tasty yeah, taste is very important because जब तक आपके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा मुंह में पानी नहीं आएगा तब तक वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पैदा होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फूड इज फॉर टेस्ट ओके और क्यों खाते हैं हम खाना हम चलिए सोचिए So So what I think is nowadays, आप या मुकेश So, okay, what I think is that at times we don't allow our instincts and we just eat because of fears everybody else is having, or we are in a social gathering, or I mean, we may not need it, the body may not need it, but we still end up, giving away and munching or whatever. Absolutely. So that is out of fear. So I think that always happens with most of us. Yes, absolutely. Your social circle, your friend circle, your food priming, advertisements, कहीं भूख नहीं है चलते चलते देखा यूं चल गया तो हम खा लिए definitely yes Pooja you were saying something was similar to what Mukesh was saying that nowadays it is more for entertainment. कि कुछ है नहीं तो चलो बाहर चलते हैं खाते हैं. So okay it's become a source of entertainment. yes. I'm getting bored so I eat okay eat At, अच्छा at times we eat food when we are not hungry, but emotionally also when we are some stressed or something, we overeat. We eat and we keep on binging.
यस, चलो कोई काम नहीं है तो खाना चालू कर दो. खाना. यस, वाइफ से झगड़ा हो गया तो यू फाइंड कंफर्ट इन फूड बिकॉज फूड इज वेरी कंफर्टिंग ऑल्सो. Okay, so we eat to boost our immune system. Okay, पूनम is saying, okay, to boost our immune system इसलिए भी खाते हैं हम. Okay, इतने सारे कारण है खाने के. Okay, nourishment, enjoyment, emotions, fight illness. Okay, yeah, yes, definitely at Sharan we believe that you can like reverse your illnesses with food. Definitely, thank you for sharing. So again, जब भी आप खाना खाने बैठे सोचिए, why am I eating this? क्या समय हो गया खाने का इसलिए खा रहे हैं? क्या भूख लगी इसलिए खा रहे हैं? क्या हमें प्यास लगी इसलिए खा रहे हैं? बहुत कुछ मैंने काफी हिंट्स दिया है आपको. थिंक अबाउट इट. व्हाई यू आर ईटिंग फूड. नेक्स्ट, whom आर यू फीडिंग. सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खाना तो हम खा रहे हैं बट वो किसे मिल रहा है. व्हाट डू यू थिंक. अगेन अ वेरी डीप क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी डीप क्वेश्चन. आर यू Cells फीडिंग of योर. the body. ओके, सेल्स ऑफ द बॉडी. हु वाज दैट. विभूति. ओके, सेल्स ऑफ द बॉडी. ओके, विभूति सिंह सेल्स ऑफ द बॉडी. और किसको हम खाना खिला रहे हैं? और कौन है to हमारे अंदर जो. to our mind. ओके, माइंड को खाना खिला रहे हैं बिकॉज Good माइंड food इज क्रेविंग. always. Yeah, mind is craving for food. Mind, body, and soul. Rumit, perfect. Yeah, Rumit is saying mind, body, and soul also. So soul, I would like slightly not disagree, but soul is like perfect. Soul doesn't need any food. So yeah, it is generally said mind, body, and soul. But yeah, हम कभी कभी मन के लिए खा लेते हैं कि चलो मन चल गया तो खा लिए. और क्या हमारे पेट के अंदर क्या होता है? हिंट दे रहा हूँ मैं आपको. What is there inside Gut. our stomach? Gut. Gut bacteria. Yeah. So sometimes we eat for our gut bacteria. Okay. So सोचिए कि कौन सा मेरा बोलते हैं ना, which part of my being is craving for food. Is it my mind? Is it my gut? Is it actual hunger? कई बार हमें 1 घंटा खाने के बाद भी भूख लग जाती है. क्यों लग रही है हम कभी सोचते नहीं. एंड यू स्टार्ट ईटिंग समथिंग. यू टेन टू ईट एवरी 2 hours समटाइम्स की हर 2 घंटे में भूख लग रही है. यू डोंट थिंक what part of us is demanding that food. Think about it before eating. Very very important these steps. And one last question, and then I start with my actual presentation. Are you eating real food? This answer you will get in the presentation. You don't need to answer this. ये आपको प्रेजेंटेशन में अपने आप मिलने वाला है. ओके, सो पहले हमें समझना पड़ेगा फूड होता क्या है. ओके, सिंपल चीज. व्हाट इज फूड. सो यस, समवन वेरी राइटली hit the nail on the hammer. बोलते हैं hammer on the nail. Food is an essential source of energy that is needed by, sorry I cannot read this, yeah, that is needed to keep organisms alive including humans and animals. It's as simple as that. Okay, so food is an essential source of energy. ये हमें समझना पड़ेगा कि food जो हम खा रहे हैं, it's a source of energy for you. And कहाँ से आता है food? What do you think? Food कहाँ से आता है? From where do we get this source of energy? Nature. Plants. Sun. Sorry, I was not there. Na- Yeah. Nature. Sun. Okay, sun. Who said sun? Who was that? Okay, Poonam is saying sun. Somebody said nature. What Air, else? air, Sorry? air. Air. Okay. हवे से खाना आता है. Okay. So sun से खाना आता है, हवे से आता है. Farmers. Soil. Soil. Okay. So see, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब चीज. Just a sec. There is some noise going on. I'll just. ये सब चीज ठीक है. सन, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब तो खाना आ कहाँ से रहा है? सोचो तो सही. फ्रॉम वेयर? व्हाट इज फीडिंग द एंटायर इकोसिस्टम? कम ऑन, बहुत हिंट दे दिया मैंने. व्हाट इज फीडिंग द एंटायर? सी ऑल दीज बोलते ना, ऑल दीज आर लाइक असिस्टिंग दैट थिंग टू प्रोड्यूस फूड फॉर यू. बट व्हाट इज मदर अर्थ. मदर अर्थ? नो वर्षा जी, नो. मदर अर्थ, मदर अर्थ सी अगेन सॉइल हो गया, मदर अर्थ हो गया. कहाँ से खाना आ कहाँ से रहा है हमारा? Seeds. यार सीड्स कहाँ से? नो. सी सीड्स अगेन, सीड्स को अगर हम ग्रो करते तो क्या बनता है? Plants. 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 Yes. So if there are no plants, there will be no life on earth. Think about it. It's a very very profound thing which we never think about, that हमारी जो एनर्जी आ रही कहाँ से आ रही है? प्लांट से आ रही है. प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो सन वाज राइट, एयर वाज राइट, वाटर वाज राइट, बट can we convert that into energy? Can human beings do that? No. Only the plants
through a process which is known as photosynthesis, are the primary producers in the entire food chain, meaning they create the food that sustains all other life forms, including animals and humans. So actually जो food होता है वो plant से आता है. Okay. So life would be impossible without plants. This is a true statement. This is not exaggeration. This is a true statement. So किसी ने स्टार्टिंग में बोला था फूड इज एनर्जी. सो प्लांट एक ऐसा किंगडम है जो खुद का खाना बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है. ओके. They convert the energy from sun, water, carbon dioxide to produce oxygen and carbohydrates. And all other life forms are dependent on plants for survival. So next question to you is it better to get your energy directly from the source, that is plants, or use other animals as a medium to get nutrition? What do you think? I want new people to answer who are not a part of my classes. कि दो सोर्स है खाने का, राइट? एनिमल से भी हमें न्यूट्रिशन मिल सकता है, बट एनिमल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम वेयर एनिमल्स आर गेटिंग द न्यूट्रिशन? Plants. बोलते हैं दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, बट गाय में कहाँ से आया? गाय क्या खाती है? घास खाती है, ऑब्वियसली, राइट? सो व्हाट इज बेटर टू गेट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, द बेस्ट वे, और रूट इट थ्रू समवन? चलिए, anybody here who believes other than plants? Directly from the plants. Rita Bhabi is selling directly from the plants. Anybody here? Any other opinion? See, you can get nutrition. No, you can not plants only. See, Romiji, you can get your nutrition from animals also. Because animals जो खाते हैं, they convert it into certain forms, and human beings also cut the animal and eat that. Nothing wrong in that. You are getting nutrition from that also. बोलेंगे एवरीबॉडी विल बी शॉक्ड, ये क्या आज बोल रहा है यार, ही इज लाइक कंप्लीटली होल फूड प्लांट बेस्ड वीगन एंड ही इज सेइंग दैट. बट टेक्निकली यस, यू कैन गेट योर न्यूट्रिशन फ्रॉम एनिमल्स. पर आगे क्या, देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो भी सोर्स से अपना खाना ले रहे हैं, द सोर्स, ओके, यू आर आइदर गेटिंग अ बोनस और अ बैगेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमें समझने के लिए. दिस प्रोबेबली नो वन हैज टोल्ड यू एवर इन योर लाइफ. सो सपोज मैंने जैसे बोला, यू कैन गेट योर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, यू कैन गेट योर न्यूट्रिशन फ्रॉम एनिमल्स. बट अगर आप एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? व्हाट इज द बैगेज वी आर गेटिंग? फर्स्ट, इट इज वेरी लो इन फाइबर. Okay, so if you are eating meat, if you are eating fish, if you are eating dairy, almost zero or no fiber, and that is the major reason for digestive issues. I get a lot of clients with constipation, bloating, acidity, indigestion, leaky gut, these kind of things. Major reason is food doesn't contain any fiber. तो क्या होता है? Fiber can only come from plants, not from animals. Okay. Next baggage is it is very high in saturated fat. This is a major reason for diabetes because of insulin resistance. This is a major reason for heart disease, major reason for blood pressure, basically metabolic syndrome जो बोलते हैं, because animal foods are very high in saturated fat. It doesn't contain any antioxidants. This is very important. Hormonal mismatch. So like humans have a nervous system, we have hormones, we have this endocrine system. Even animals have that. And if you're eating an animal, suppose you're eating a fish, you are getting those hormones. If you're eating a cow, you're getting those hormones. If you're drinking milk, तो cow के जो hormones है वो आपके अंदर आ रहे हैं. And our body cannot process that. Our body identifies that like a foreign substance because body, सोचिए ना, आप इंसान हैं और आप किसी सपोज गोट को खा रहे हो या ईटिंग अ डक, और इफ यू ईटिंग कॉकरोचेस, क्या क्या नहीं खाते, स्नेक्स. सो उसके जो हॉर्मोन्स है आपके अंदर आ जाते हैं. इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू. सो इट्स लाइक यू हैव अ मर्सिडीज कार. ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको. एक मर्सिडीज की गाड़ी है और उसमें इंजन आ जाएगा मारुति का. ओके, सो विल दैट कार वर्क प्रॉपरली? मे बी वो घिस पीट के चलेगी, थोड़ा थोड़ा चलेगी. इट कैन नेवर रन अप टू इट्स फुल पोटेंशियल. सो भगवान ने, में बोलते हैं ना, भगवान ने एक बहुत अच्छा शरीर हमको दिया था, बट उसमें क्या होता है? बच्चा पैदा हुआ, पहले कुछ महीने तो माँ का दूध मिलता है, बट नाउ मदर्स आर लाइक मॉडर्न एंड उनको या तो मिल्क नहीं आता बिकॉज मदर देमसेल्व्स आर ईटिंग सो मच जंक फूड. तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट गिविंग दोस बेबी पाउडर्स जो आते हैं, फॉर्मूला मिल्क या फॉर्मूला पाउडर, वो सब देना चालू कर देते हैं बच्चों को. पहला बर्थडे आते तो क्या देते हैं उसको? Yes, happy birthday to you. चलो, let's start eating cake.
एंड उसको स्वाद मिल जाता है, वो मैदा, तेल और शक्कर का स्वाद मिल जाता है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट द हार्मोनल मिसमैच जो होता है. सिमिलरली इफ यू आर ईटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स, तो उसके हॉर्मोन्स हमारे अंदर आ रहे हैं. तो कैसे हमारा शरीर बराबर काम करेगा? आप लॉजिकली सोचिए. आप, आपका शरीर जो है उसका एक सर्टन पीएच लेवल होता है, उसका एक सर्टन ग्रेडेशन होता है, जो एनिमल्स का पूरा अलग है. एंड उसको आप अपना हिस्सा बना रहे हैं. देन यू से व्हाई आई एम नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. Think about it. This is hormonal mismatch is a big thing. We have actually become hormonally modified human beings. We are no longer human beings. हमारे hormones ही पूरे change हो गए हैं. बीमारी तो आनी है आपको, सफरिंग तो आनी है आपकी, बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशंस आने हैं आपको, डायबिटीज आएगा ही आपको, बिकॉज योर body is not functioning properly because of this mismatch. It's a very big concept. There can be an entire session on this, but let's stick to this today, that this is a baggage that you get from animal foods. Increased toxicity because they stay in our system longer. So अगर आप कोई फल खा रहे हैं, अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, it stays in your stomach for maximum 2 hours. It then passes your stomach. Okay, if you are eating grains, grains take 7 to 8 hours to digest. Okay, grains. And if you are eating non-vegetarian food like paneer, paneer is also non-vegetarian because vegetarian means that comes from vegetable sources. Okay, so I consider milk, paneer, everything as a non-vegetarian food. They take 24 to 48 hours to digest, and the longer the food stays in your system, the more it becomes toxic. Okay, so increased toxicity, this is also baggage you get when you get your nutrition from animal sources. And last but not the least, emotions of fear and pain. No animal likes to be cut. Why do animals have, when they're in the slaughterhouse, when they see other animals being cut, they have the emotions of fear, they have this emotions of they want to run away. Okay, so that emotions also becomes a part of you. Like you said, जैसा अन्न वैसा मन. तो एक गाय का बछड़ा है, जब बछड़े को माँ से दूर करते हैं, बिकॉज दूध तो तभी आएगा जब बच्चा होता है. ओके, सो काउ ओनली गिव्स मिल्क व्हेन इट गिव्स बर्थ टू अ काफ. ओके, दे हैव गुड बॉन्डिंग. मदर है, गाय को माँ क्यों बोलते हैं? हम भी बोलते हैं गाय हमारी माता है, एंड हमारी माता का ही हम बच्चे को अलग करके उसका दूध हम पीते हैं. तो उसमें क्या होगा? बिकॉज काउ ऑल्सो क्राइज when the calf is taken away from it. तो you get that emotion of separate that, कि दोनों को पैदा होते ही उनको अलग कर दिया गया, माँ और बच्चे को. तो वो इमोशंस भी आपके अंदर आते हैं. नाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन, जो पहला वाला स्लाइड था. आई जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. इज इट बेटर टू गेट एनर्जी directly from the source, or should you get energy from animals? Because yes, animal foods have protein, they have those vitamins, they have those minerals, but what is the best for me, ये कोई सोचता नहीं है. You just go by what your YouTube influencer says, or what क्या करते आ रहे हैं, and we don't even think. Like I said, my morning message in the group क्या था? What you are eating is probably the most important variable that will determine your longevity. कि आप कितने साल इस धरती पे रहेंगे, क्या आप खा रहे हैं, वही डिसाइड करेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ फोटोग्राफ इफ यू वांट. व्हाट बैगेज. सो जब भी हम कोई खाना खाते हैं, पहले सोचिए, एम आई गेटिंग अ बैगेज और एम आई गेटिंग अ बोनस आउट ऑफ इट? ऑलवेज थिंक, देन ईट. देन अगर आज अगर हम देखें कि ऑल द हॉस्पिटल्स आर फुल, गो टू हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल फुल है, people are suffering so much in spite of we being the most wealthiest ever. Human beings were never so abundant. इतनी सुख, इतना पैसा हमारे पास कभी नहीं था, बट इतनी बीमारियां भी कभी नहीं थी. इसका कारण क्या है? So there are three factors which are responsible for most of the diseases. One is insulin resistance, next is oxidative stress, and last is inflammation. Okay, these are very technical terms, आपको नहीं समझता है. तो insulin resistance is like your body is not able to convert your food into energy, that's why your blood sugar goes up. Oxidative stress is there are a lot of free radicals in your body because of so much of toxicity. So because of that, what happens is your cells become damaged. And inflammation is, this is a natural response of the immune system in the body, but when it becomes chronic, it leads to various diseases like arthritis, it can cause heart diseases, it can cause diabetes, it can cause cancer also. And the number one reason for this trifecta is your food, is the food that we eat. That is the actual reason. So if somebody dies because of heart attack, so in the
Death certificate it comes, the reason is heart attack. The actual is not, reason is not heart attack. Heart attack is the effect. The cause was the food that you eat, because the food that you eat that contained a lot of saturated fat which clogged your arteries, which led to a heart attack. Okay, so if you have diabetes, so sugar कैसे आया? Because of insulin resistance. And why does insulin resistance happen? Because of wrong pattern of eating. If you have cancer, cancer क्यों आया? Because of oxidative stress. Why did oxidative stress happen? Because your food didn't contain antioxidants. If you are having arthritis, why did arthritis happen? Because of inflammation. Inflammation क्यों हुआ? Because your immune system didn't respond properly. It started recognizing your own healthy cells as foreign body, and वो भी क्यों होता है? Because of the wrong food that we are eating. So basically wrong food is the number one reason for deaths, or deaths that are happening. गलत खाना हम जो खा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है. So number one reason for all three is the food that we consume. So important. So what are the culprits here? चलो मनीष आपने बहुत कुछ बता दिया, बट क्या क्या चीज से हमें बीमारी हो रही है और क्या चीज हमें स्टॉप कर देना चाहिए? फर्स्ट इज डेड फूड्स. So you cannot eat something dead and expect that to give you life. So somebody told that I need energy from food, right? So my funda is that you should be able to get the maximum nutrition in the least amount of calories. Okay, so our food should be nutritionally dense. So dead food मतलब क्या होता है कि anything which is not in its natural form is dead. That includes obviously animal foods. If you are eating a chicken, so क्या हुआ? आप एक मुर्गे को मार के खा रहे हो, तो you eating a dead animal आप खा रहे हो. Okay. If you are eating something which is highly processed, which comes in packets, जो packaged foods आते हैं, ultra processed foods आते हैं, those are dead foods. So simple logic ये है कि live foods क्या होते हैं? If you like sow them, if you sow them in soil, it should sprout. Okay. So if you sow, suppose biscuits, आपने बिस्किट का गार्डनिंग चालू कर दिया तो क्या उसमें से बिस्किट उगेंगे? नहीं उगेंगे. तो इट इज अ डेड फूड. ओके, सो इफ यू आर ईटिंग मोर ऑफ डेड फूड्स, डोंट एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्गर. ओके, फूड्स विच आर लो इन डाइटरी फाइबर. सो आई वुड से फाइबर इज द न्यू प्रोटीन. इतना जो हल्ला होता है आजकल, हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन, सुबह उठते ही प्रोटीन, रात को सोते वक्त प्रोटीन, हर मील के साथ प्रोटीन, दैट इज द कॉस्ट नंबर वन रीजन फॉर कैंसर. ओके, डाइट्स विच आर वेरी हाई इन प्रोटीन, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, उसमें कैंसर होता है. प्रोटीन आइडियली शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ योर कैलोरीज. फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर गट बैक्टीरिया लव्स फाइबर. सो ईट फूड्स आर वेरी हाई इन फाइबर, जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिल सकते हैं इन द होल फॉर्म, जो बताऊंगा मैं आपको आगे. अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जंक फूड्स, नाम ही जंक है. आई एम वेरी सरप्राइज, पीपल टेल, वो बोलते हैं कि दिस इज अ जंक फूड, स्टिल दे ईट. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग आई से इन मोस्ट ऑफ माई क्लासेस, कि कोई भी कभी बाहर म्युनिसिपालिटी का कचरा अपने घर में जंक लाएगा क्या? हाँ, अपना घर तो बहुत सुंदर रखना चाहते हैं, राइट? यू डेकोरेट इट, यू कीप इट ब्यूटिफुली, यू डोंट अलाउ इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ डस्ट टू सिट इन योर लिविंग रूम एंड योर बेडरूम. बट व्हाट अबाउट योर बॉडी? Do we ever think twice before putting anything inside of us? And you keep eating those junk foods, and then you come to a doctor, the doctor fix me. Even God cannot fix you if you eat a lot of ultra processed and junk foods. SOSM, this is stands for salt, oil, sugar and milk. These are four poisons. ये चार poisons है, which unfortunately most of us are consuming, and look at where we are today as a human race. So salt means हमारे सब खाने में सॉल्ट होता ही है, बट वी हैव लाइक बिकम addicted to so much of refined salt that we need additional salt in our diet. So if you look at nature, no other creature needs anything additional to make their food tasty. Once you start reducing the amount of salt in your diet, you will come to know the natural taste of foods, that all the vegetables have salts in them, all the fruits have sugar in them, naturally मीठा होता है ये. ऑयल तो खैर, ऑयल और मिल्क तो इंसान के लिए बना ही नहीं है. आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, आई हैव कवर्ड दैट सेवरल टाइम्स इन माय क्लासेस, दैट दीज टू आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. कि हम जो तेल खा रहे हो क्या कर रहे हैं? हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है. आई टुक अ सेशन ऑन ऑयल जस्ट 3 days ago in the morning, कि व्हाट इज ऑयल लिंक टू अस. एंड मिल्क, ऑब्वियसली यार, मिल्क कब आता है? किसी माँ को जब बच्चा होता है. तो नेचर ने किसके लिए दूध बनाया? उसके बच्चे के लिए बनाया. मिल्क में जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो
प्रोटीन्स होते हैं वो गाय के लिए होते हैं, गाय के बच्चे के लिए होते हैं, वो 2 साल में एडल्ट बन जाता है, वो 2 साल में 1000 पाउंड का बन जाता है, हमें 18 साल लगता है 70 किलो का होने के लिए, अगर आप नॉर्मल वेट है तो। हम सोचते नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं, बस लेना है, मिल्क चाहिए, आई नीड कैल्शियम फ्रॉम वेल गेटर में प्रोटीन 100% इट हैज कैल्शियम, 100% इट हैज प्रोटीन, बट जो बैगेज साथ में आ रहा है, द बैगेज दैट यू गेटिंग फ्रॉम मिल्क, इज इट वर्थ इट? मैंने सारा बताया व्हाट बैगेज यू गेट फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स, बट हम तो सुनने के तैयार नहीं है। हमें बचपन से सिखा दिया गया है, हमारे डॉक्टर ने बोला है, अरे डॉक्टरों को कितना न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, डॉक्टर से बता देंगे जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, हाउ मच न्यूट्रिशन इज टॉट टू देम इन देयर मेडिकल स्कूल्स। इट्स लाइक यू कमिंग, आई एम अ हेल्थ कोच, इफ यू कम टू मी फॉर मेडिसिन, इफ आई स्टार्ट राइटिंग मेडिसिन आप कभी नहीं लोगे, यू विल ऑलवेज टेक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ registered medical certified doctor. Then why do you go to someone who has not studied nutrition, who just go by hearsay and they say that milk is good for you? अगर मिल्क इतना अच्छा होता तो इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता, इतना कैल्शियम होता तो? इंडिया इज लाइक द, बोलते हैं ना कि लीडर फॉर डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज लाइक अ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दीज थ्री कंडीशंस, एंड नंबर वन रीजन इज मिल्क। एंड लास्ट कल्प्रिट इज फ्रीक्वेंट एंड ओवर ईटिंग, कि सुबह उठते ही हमें पहले 4 बादाम चाहिए, 4 अखरोट चाहिए, वो चाहिए, थोड़ी देर बाद चाय बिस्किट तो चाहिए ही, फिर थोड़ा फल खा लो, फिर नाश्ता कर लो, फिर 11 बजे थोड़ा चना खा लो, फिर 1 बजे नाश्ता कर लो, फिर 4 बजे कुछ खा लो, चलो ऑफिस में कैंटीन में तो थोड़ा चाय पी लिया, साथ में कुछ नाश्ता कर लिया, फिर 6 बजे भूख लग गई, कुछ खा लिया, 8 बजे फिर खा लिया, 10 बजे सोने के पहले तो हल्दी का दूध जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। क्या नतीजा होता है? यू गेट इंसुलिन रेजिस्टेंस। if you eat so often your pancreas start failing. Okay, जब भी हम खाते हैं हमारा पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है खाने को जो सेल्स में ले जाने के लिए, बट इतना ज्यादा हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट अवर सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, यू गेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दैट इज द नंबर वन रीजन फॉर डायबिटीज। डायबिटीज खाली मीठा खाने से नहीं होता है, diabetes frequent eating से भी होता है। So this is one major reason that we have been like primed to believe that you need food every 2 to 3 hours to keep your metabolism high. So my question to you is, who will benefit the most if you eat every 2 to 3 hours? कौन सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा उसमें? Who will make the most money when you eat? Companies, Of Food course. companies, industry. food companies. Yes. Like I'm in सारी बिजनेस, आई मीन सारी बिजनेस। सो मैं सलाह दूंगा कि दिन में आपको 4 बार साड़ी पहननी चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? हम्म कि सुबह उठते ही पहले नई साड़ी पहनी है, बाद में पिंक साड़ी पहनी है, बाद में ऊपर गया तो येलो साड़ी पहनी है, शाम को ब्लैक साड़ी पहनी है, योर हस्बैंड विल बी वेरी हैप्पी। ऐसा कोई मैं ऐड रन करूं, एंड इफ द एंटायर वर्ल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग दैट यू शुड वेयर अ साड़ी एवरी 2 hours, माई सेल्स वुड राइट स्काई रॉकेट 6 times, आई विल बेनिफिट द मोस्ट। सो ऑल द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, ऑल मतलब कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आर पेड। ओके, जो आजकल फेसबुक से ज्ञान मिलता है, हमें व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है, न्यूट्रिशन से ज्ञान मिलता है, इट्स अ वेरी बैड इंडस्ट्री इन विच वी आर अनफॉर्चुनेटली। जितना ज्यादा खाओगे 2 जन बेनिफिट करेगा। कौन बेनिफिट करेगा? एक तो फूड इंडस्ट्री, और दूसरा, आई एम सॉरी टू से डॉक्टर्स हियर, बट pharma industry, pharma and the doctors. So there are two industries. One is the food industry that is not concerned about your health, and one is the disease care. मैं उसको health care नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ disease care industry. The hospitals, they are not concerned about the food that you eat. And बीच में हम दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। तो लोग, पीपल कम टू मी, मनीष मुझे क्या खाना है ठीक होने के लिए, मतलब कुछ मत खाओ, कम खाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। But nobody makes money out of that. People don't come to me to listen to that. So that's why I don't get so many clients, because यार ये तो खाना कम कर रहा है हमारा। अरे हम खाए क्या, हमें एनर्जी कैसे आएगा? हाउ कैन आई बूस्ट माई इम्यून सिस्टम? टेल मी सम सुपर फूड। मैं बोला डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम खाओ, एक विंडो में खाओ। अरे उससे क्या होगा? कमजोर हो जाएगा हमारा बच्चा, तो कमजोर हो जाएगा, मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा? अरे खाने के लिए तो, जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ना। ऑल दीज थिंग्स हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है। So one key takeaway if you want to take from this session, don't eat frequently. So सब बोलते हैं, it's a number one reason for so many diseases. बार बार खाना। Ideally human being should not eat more than 2 to 3 times in a day maximum. दो से मुंह झूठा ही नहीं करना है, not even for badam, not even for अखरोट, not even for that healthy chana or that fruit, because you are spiking your insulin so many times. Insulin spike बार बार होगा आपका, तो क्या होगा? बीमारी आएगी आपको। इट्स, बोलते हैं ना, आदत पड़ जाएगा। पहले 5-7 दिन आपको थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम्स होगा। वाई? बिकॉज वी हैव बिकम एडिक्ट्स। कैसे कोई सिगरेट अगर पीता है, उसको अगर सिगरेट छोड़ने के लिए बोलेंगे, कैसे उसको चक्कर आएगा? ही विल हैव दोस विड्रॉल सिम्टम्स, दोस डी एडिक्शन सिम्टम्स। कैसे कोई अल्कोहलिक को बोलेंगे? सो आई एम सॉरी टू से दैट वी हैव बिकम जंकीज।
वी ऑल हैव बिकम जंकीज, दैट खाना नहीं मिलता तो हमें चक्कर चालू हो जाता है, फिर क्यों हो रहा है सोचो तो सही। 2 घंटा पहले तो आपने खाया था, कहाँ से भूख लग गया, इतना बड़ा पेट होता है हमारा, और स्टमक इज द साइज ऑफ दिस फिस्ट, बट वी हैव बीन लाइक टोल्ड बाय सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स टू ईट एवरी 2 आवर्स। क्या हो गया, बीमारी आ गई। बीमारी आती तो क्या करते, जाते किसके पास है, डॉक्टर के पास। डज इंसुलिन स्पाइक हैपन इवन विद नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड्स? Anything which has calories, so I won't go into carbs, fats and proteins, but anything which has calories spikes your insulin. I'll explain in detail later on, आने वाला है in the session, it will come. Okay, तो कौन कौन सी इंसुलिन स्पाइक होता है बताऊंगा मैं आपको। आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडी, अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई गेव माय प्रेजेंटेशन इन कॉर्नेल आल्सो रिगार्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई विल शो दैट आल्सो। या सो डेड और लिविंग फूड्स का अगर आपको समझना है, एक फोटो ले सकते हैं, फोटो डेड फूड्स। तो इवन कुक्ड फूड इज डेड एक्चुअली, अगर हम बहुत ज्यादा कुक्ड खाते हैं ना, वो भी डेड होता है। बट डेड फूड्स आर विच कम्स इन पैकेट्स, एनिमल फूड्स, कुक्ड फूड्स, एंड लिविंग फूड्स आर विच हैव लाइफ इन देम, दीज आर लिविंग फूड्स। सो आप समझ जाइए दैट विथ ईच बाइट you are either increasing or decreasing your lifespan. Yeah? Doesn't it make worth it to think about our food? Probably हम क्या खा रहे हैं ना, ये सबसे important decision हमारा होना चाहिए लाइफ का। Not whom you will marry, not what work you will do, not what study you will do, even for your kids. क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ में? बच्चा है तो खाएगा ही, बच्चा है तो तली हुई पूड़ी खाएगा ही, बच्चा है तो शुगरी ड्रिंक्स लेगा ही। एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी डॉटर का बर्थडे था। ओके, इट वाज अ थर्ड बर्थडे एंड आई वाज वेरी हेल्थ कॉन्शियस बिकॉज आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम माय ऑटोइम्यून कंडीशंस एंड वांटेड माय चिल्ड्रन टू ईट हेल्दी फूड्स। सो उसके बर्थडे में मैंने उन्होंने बोला सैंडविच रखना है, तो उन्होंने सैंडविच रखा, चीज सैंडविच एंड विद वाइट ब्रेड। तो उन्होंने बोला आप रखो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट कीप सम मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच विथ वेजी विथ सम सैलेड्स। ओके, दे टोल्ड किड शुगरी केक रखना है, मतलब शुगरी केक मत रखो, थोड़ा फ्रूट्स भी रख दो, कोई बच्चे को अगर फ्रूट खाना हो तो फ्रूट खा ले, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो यू नो व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? वो सारा ब्रेड एंड फ्रूट्स तो हमने रख लिया, सारा ब्रेड गया हमारे वॉचमैन को। कि चिल्ड्रेन थॉट दैट अरे यार बर्थडे में कौन ये सब चीज खाता है, बर्थडे में तो जंक खाते ही हैं, पास्ता चीज पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाते ही हैं, बर्गर खाते ही हैं। किसने ये रूल बनाया? व्हाट आर वी फीडिंग टू अवर किड्स? वी डोंट इवन थिंक दैट कि बच्चा है तो 1 गिलास दूध पी के तो स्कूल जाएगा ही, राइट? दूध पिएगा तो उसको एनर्जी मेंटेन रहेगी। किड्स रिफ्यूज, आई डो, आई एम नॉट हंग्री। कौन, आप सुबह 6:30 बजे उठो, 7 बजे आप अपने काम पे जाओ, कितने लोग खा के जा सकते हैं मुझे बताना आप 1 गिलास दूध पी के? यू विल जस्ट प्यूक आउट दैट मिल्क। बोले सुबह कौन दूध पी के जाएगा? बच्चे को फोर्स कर दिया गया तो उसमें क्या मिला देते हैं हम, थोड़ा सा कोई पाउडर मिला दिया, थोड़ा शक्कर मिला दिया, थोड़ा बोनविटा मिला दिया, कॉम्प्लेन मिला दिया, है वो खा के बच्चे को भेजते हैं। तो चाइल्ड इज नॉट क्रेविंग मिल्क, एक्चुअली इज क्रेविंग दैट शुगर स्पाइक। बट हम सोचते नहीं हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, बस देना है, बच्चा है तो खाओ। ये दे दिया, बस के लिए कुछ दे दिया, टिफिन के लिए, लंच के लिए कुछ दे दिया, स्नैक के लिए कुछ दे दिया, लौटते में बस के लिए दे दिया। आया तो खाएगा, आएंगे तो उसको रसना या टैंग तो देना। यार क्या दे रहे हो, रसना टैंग जहर है वो, नटेला तो लेगा ही बच्चा। अरे आप अपने बच्चों का लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं। 8 and 10 year olds आर गेटिंग हार्ट अटैक्स, 14 and 15 year olds आर गेटिंग ऑटोइम्यून कंडीशंस। हम सोचते नहीं, पीसीओएस पीसीओडी सो कॉमन इन गर्ल्स एज यंग एज 15 and 16। ओबेसिटी तो खैर बीमारी मानते नहीं है, कि बोलते हैं ना चोरों के गांव में कोई चोर नहीं होता, वो बात हो गई कि सभी मोटे हम भी मोटे, तो क्या फर्क पड़ता है? उल्टा कोई पतला हो गया तो उसको बोलते हैं क्या बीमार पड़ गया क्या तू? उसको, जो अगर मुझे कोई देखता है सुबला पतला, अरे क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तुम्हें? ओके, पहले तो 80 किलो के थे, 65 किलो के, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? एंड व्हेन आई वाज 80 kgs आई वाज नॉर्मल फॉर द सोसाइटी। सो डोंट सेट योर, बोलते हैं ना कि इट्स नो मेजर ऑफ हेल्थ, जिड्डू कृष्णमूर्ति said it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society। ये सोसाइटी हमारी बीमार है, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिक सोसाइटी, एंड इफ यू adhere to those norms you will be sick forever। so think about before putting anything into your mouth। this is very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर बाइट आपका लाइफ स्पैन डिटरमाइन करेगी। क्यों करेगी? फैक्ट देखिए, दिस इज अ फैक्ट। poor diet causes 22%, but it is, I believe it is as high as 80%। why? because cancer, heart disease, जो भी cause of death होता है, that is also because of food। so poor diet, directly direct correlation poor diet का है 22% of global deaths। मतलब 1 in 5 person is like dying because of wrong eating। मतलब यहाँ पर अभी 30 लोग हैं, तो एटलीस्ट 5-6 of us will die because of wrong eating। that's the probability।
एंड ओबेसिटी जैसे मैंने बोला कि 190, अब नीचे फिगर देखेंगे, $190 बिलियन, ये यूएस का फिगर है 2019 का. This is the estimated annual healthcare cost, I would say disease care cost of obesity related illness. कि अगर हम ओवरवेट हैं, हम सोचते हैं हम नॉर्मल है, अरे चल रहा है, कुछ नहीं है, अरे बाद में खेल दिखाना चालू करते हैं जब 40 50 60 के होंगे ना. एंड योर फाइनल गोल्डन ईयर्स इज लाइफ इन हेल इफ यू आर ओबीस. सो अगर वजन ज्यादा है आपका, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू ब्रिंग इट डाउन. जस्ट गो डीप, वर्क विद अ हेल्थ कोच, वर्क विद अ न्यूट्रिशनिस्ट मे बी, हु knows how to bring down weight. खुद ट्राई मत करिए. लोग क्या गलती यही करते हैं कि खुद ये हम देखते हैं कि यूट्यूब वीडियो देख के हम कर लेंगे, हम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख के अपने आप को हील कर लेंगे. 30 सेकेंड शॉर्ट से लोग पूरी लाइफ अपना प्लान कर लेते हैं. इट्स सच अ फूलिश थिंग यार. यू आर स्पेंडिंग lakhs on a vacation, you are spending lakhs on a phone, you are spending crores on a car and house and everything, and this body where you will get only one body. वो सब चीज तो हम दूसरा भी खरीद सकते हैं. If I order an iPhone and वो खराब आ गया, I can buy a different phone, but can you buy a different body? Think about it, like what obesity is doing to us. So my request to everyone is, don't wait for the wake up call. अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये मत सोचिए. डायबिटीज शो अप करने में कई बार 15 से 20 साल लगता है. हार्ट अटैक कोई एक दिन में आर्टरीज क्लॉग नहीं हो जाता हमारी. इफ यू आर वेरी लकी तो आपको छोटा छोटा वेकअप कॉल आएगा, इचिंग होगा आपको, आपकी नींद अफेक्ट होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा. दीज आर स्मॉल वेकअप कॉल्स इफ यू आर वेरी लकी. एंड इफ यू आर वेरी अनलकी, तो आजकल क्यों न्यूज में आता है इतना 30 and 40 year olds आर गेटिंग हार्ट अटैक्स. दे आर अनलकी कि इतनी छोटी उम्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है. सो डोंट वेट फॉर दैट वेकअप कॉल. So important. So now I will share the longevity diet protocol. This is from my own life experience. I have devised this. This is not from a textbook or from any research that I have done. That my goal is for my students that they should live at least 100 years. सो किसी ने कल ग्रुप में, हमारे ग्रुप में पूछा था व्हाट इज अ ब्लू जोन. सो ब्लू जोन दुनिया में 5 ऐसी जगह है जहां पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 100 years or above. Okay, and I want my forever young group to be the next blue zone in the world. Okay, so that's my vision for this blue zone, that everybody should live at least 100 years. My goal is to live 120 years personally. My goal is that, and I have set a protocol for this. So eat organic whole foods which are plant based. This is the first thing. That organic matlab that food should not be sprayed with pesticides, insecticides, all the poisons that we spread so that other animals don't eat it. It should be organic whole foods. Okay, उसे हमें refine करके नहीं खाना है. Foods which are in the most natural forms and which are plant based. हमने सीखा plant based क्यों होना चाहिए. We covered that at the start. This doesn't mean that you go entirely raw or you be on a very strict diet and your foods are not tasty. This is a very big misconception that people have about whole food plant-based diet. I'll quickly show you Sharan website. So Sharan, where I am a facilitator now, I'll show you. So this is whole food plant-based. आप सब photos देख रहे हैं सामने आप. So I can see a salad, I can see a soup, I can see some breads, I can see pizza, I can see samosa, I can see rice. Oil obviously cancel किया है उन्होंने. Yeah. So these are actual food photos by our facilitators, by our cooking facilitators. ये actual खाना है ये. So waffle भी होता है ये. But everything is whole food plant based source से आया है. So just बहुत सारे courses होते हैं. It's hardly 500,000 rupees per thing, and they bundle the courses and everything. And हम क्या क्या चीज में पैसा स्पेंड नहीं करते. क्यों ना हम हेल्दी कुकिंग सीख जाए कि बिना तेल के खाना कैसे बनता है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज से हम चीज कैसे बना सकते हैं, हम प्लांट बेस्ड मिल्क कैसे बना सकते हैं, प्लांट बेस्ड. समय नहीं है यार हमारे पास. मनीष, यू वोंट अंडरस्टैंड, माय वाइफ इज नॉट लिसनिंग टू मी. समय नहीं है उसके पास. डॉक्टर के पास जाने के लिए 4 घंटा वेट करने के लिए समय है. You have thousands and lakhs to spend on a hospital bed, but you don't have time 1 hour in a week to learn how to cook healthy. समय तो आपको देना ही पड़ेगा शरीर को. या तो इन सब चीज में समय दो, या बाद में हमारे पास आके हेल्थ कोचेस और डॉक्टर को आप समय दो. समय तो आपको देना ही पड़ेगा. चॉइस इज योर्स. Either you spend your time in healthcare or you spend your time in disease care. Learn how to cook healthy. मैं बोलता हूँ स्कूल्स में सिखाना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हेल्दी खाना कैसे बनता है. ये
ताकि हम वी कैन लाइक कंडीशन देम. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दिस फूड मार्केटिंग कंपनीज जो 8-10 कंपनीज दुनिया में है, दे आर लाइक दे हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स in their kitty and they can like spend anything to make us believe what they want. And हम क्या सीखते हैं, खाओ थोड़ा बहुत ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, नहीं एक्स्ट्रा वर्जिन इज नाइस, नो A2 मिल्क इज गुड, अरे ये तो चलता है. हाँ, सब हमें सिखा दिया गया है. खाली ये फूड प्राइमिंग में बताऊंगा व्हाट इज फूड प्राइमिंग. आई विल टीच यू दैट आल्सो टुडे. सो दिस इज समथिंग न्यू that all my students are also learning this year. So this first was, I'll just start the PPT again. Yeah, sorry. Yeah, eat organic whole foods which are plant based. This is very important. Next, maintain balance between ingestion, digestion, assimilation and excretion. ये शायद कोई सोचता भी नहीं है ये. Okay, so my question to you is, normally on an average how many times we eat in a day? Normally people eat 4 to 5 times or some even more. Okay, how many times do we excrete food? कितनी बार आप potty जाते हैं दिन में? 1, 2 maximum. Is there a balance or an imbalance? There is an imbalance. And एक एग्जांपल लीजिए, जो ऑफिस में काम करते हैं, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, इफ यू आर बॉस, आपने एम्प्लॉय को कोई काम दिया करने के लिए, 4 घंटे का काम है, अब 2 घंटे बाद उसको फिर कोई काम दे दो, 8 घंटे का काम हो गया, फिर 2 घंटे बाद उसको काम दे दो, तो क्या वो बराबर से काम कर पाएगा? सो डाइजेशन, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमने क्या खाया है और उसको डाइजेस्ट होने में कितना समय लग रहा है. तो दिस four things are there. There are 4 parts to the digestive process. First is ingestion. हम कितनी बार खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, very important. Next is digestion, जो हमारे स्टमक में होता है. थर्ड इज assimilation, जो हमारे लार्ज इंटेस्टिन में होता है, जो nutrients are absorbed and it goes into our bloodstream. And fourth is excretion. So if you are going, बोलते ना, इफ यू आर एक्सक्रीटिंग 2 or 3 times, तो उतने ही बार हमें खाना है. एक बार आपको अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो एक ही बार खाइए. एक बार पहले साफ तो होने दीजिए जो टॉक्सिन्स आपके पेट में जमा है. वो जमा होते गया and उसको अंदर जमा और अंदर डालते जा रहे हैं. फिर बोलेंगे अरे गैस हो गया, लाओ यार एक गैस की गोली लाओ, पेन 40 लाओ. अरे यार मुझे पॉटी नहीं हो रहा है, देन यू टेक अ लैक्सेटिव. अरे क्यों नहीं हो रहा है, सोचो तो सही. Why does only human being needs that? Have you ever heard any animal needing a laxative? Very rarely, I think. Hmm? Only human beings need laxative to digest food, and you eat more wrong food and more laxatives just to like go in that vicious circle of wrong food and laxatives and those acidity medications and those BP medications and diabetes medication. Are these all are related to food? Just change your food and these things go away very easily. At Sharan, hardly in 1 to 3 months we reverse diabetes. पूरी जिंदगी आप डॉक्टर को पैसा देते हो, पूरी जिंदगी आप दवाई लेते हो, पूरी जिंदगी अपने किडनी हार्ट लिवर खराब कर रहे हो, 2-3 महीना में आप सीख लो क्या था, कैसे रिवर्स करना है. इट्स वेरी इजी. हम बोलेंगे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट हो जाएगा. अरे इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, होता नहीं है, समय नहीं है, निकालो समय, बाद में समय निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लो तो पूरी जिंदगी आपकी सुधर जाएगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये 4 चीज आप याद रखिएगा. क्या? इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, एक्सक्रीशन. बैलेंस है कि नहीं, थिंक फॉर योर सेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज hydrate well. As I said, most of the times we are thirsty. Sorry, most of the times we think we are hungry, but actually we are thirsty. तो कभी भी आपको भूख लगे तो पहला प्रोटोकॉल होना चाहिए, 1 ग्लास पानी पीजिए आप. बिलीव मी, 90% ऑफ टाइम्स योर हंगर विल गो अवे. बट हम सोचते नहीं है ये कि पानी पीना कितना जरूरी, बिकॉज योर बॉडी इज 70% वाटर एंड यू आर डिप्राइविंग दैट. बिकॉज एक तो खाना हम जो खा रहे हैं डेड फूड है, उसमें वाटर रिच है ही नहीं वो, ऊपर से हम पानी भी कम पी रहे हैं. तो क्या होता है, सेल्स आर हंग्री. दे आर हंग्री फॉर व्हाट? दे आर क्रेविंग वाटर. मुझे पानी दो, मुझे पानी दो. जो क्रेब साइकिल होता है उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है. बट हम क्या करेंगे, भूख लग गया, चलो थोड़ा कुछ और खा लो, कुछ और खा लो, एंड दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लिव 100 years. हाइड्रेट वेल, इसका ये नहीं है कि आप 5 लीटर पानी यहाँ से पीना चालू कर दे. डोंट डू दैट. ईट फूड्स विच आर हाई इन वाटर. Okay, so anybody wants to tell me which foods are high in water? Any examples? Which foods are high in water? Citrus New fruit. people. Fruits. Sorry, Fruits and vegetables. which fruits and vegetables are more high in water? Citrus Watermelon. fruits. Cucumber, Cucumber, okay. Yes. Watermelon. Melons, okay. oranges, Oranges, sweet lime. Tomato. banana, sweet lime. Yes.
तो देखिए, कोई भी नाम लिया मैगी का, कोई भी नाम लिया बिस्किट का, कोई भी नाम लिया कोई एनिमल फूड का, दूध का, नहीं लिया कोई किसी ने। आपको सब पता है, बट अवेयरनेस में नहीं है। क्यों नहीं है वही बताऊंगा आपको, क्यों आपके अवेयरनेस में आता नहीं है। टेल दैट ऑल्सो, एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट। सो हाइड्रेट वेल, फॉलो द सर्कैडियन रिदम। ये तो बोलो नहीं, दिस इज लाइक अ चाइल्डिश थिंग, बचपन में हमें सिखा दिया गया था, फर्स्ट ग्रेड में सिखा दिया गया था कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। Okay, so eat as per nature. So human beings are a part of nature. You are not different from nature. So till the time sun is up, don't have any cooked food. Breakfast should be raw as far as possible, unless you have any other condition which prevents you from eating raw food. For 99% of people, yes, fruits should be your breakfast. So at Sharan, we prescribe green smoothie, which is very tasty. It's not that kadwa smoothie, and you don't need a lot of preparation. It's just 2 or 3 ingredients we use, and we make a green smoothie. We have green smoothie classes also online, जो चलता है, offline, online सब चलता है. We have facilitators here who teach free of cost. हम तो सिखा देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि ग्रीन स्मूदी कैसे बनता है. वीडियो देख लीजिए, हम डॉक्टर नंदिता शाह का वीडियो है, हमारी रीटा भाभी का वीडियो है, वो आप देख लीजिए. तो हैव ग्रीन स्मूदी एंड फ्रूट्स, यू विल फील फुल, डोंट वरी. एक दो दिन हल्का हल्का लगेगा, दैट क्रेविंग फॉर सॉल्ट, बिकॉज we become addicts to salt. To have raw this, when sun is at the top, हमारी जठर अग्नि, digestion is at its peak. At that time, have a salad and a cooked meal. Okay, and if you want to have a last meal, have before sunset. So this is the circadian pattern of eating. Sunset के बाद कुछ नहीं लेना है. Have some water, have some herbal tea, maybe lemon water. That's it. Don't eat after sunset if you want to live 120 years. Don't eat that. Honor your bio individuality. Very very important. See, we all are unique. हम सबके फिंगरप्रिंट्स भगवान ने अलग क्यों बनाए, कि हम अलग हैं. सो द फूड दैट इज, बोलते हैं ना, जो मेरे लिए अमृत है आपके लिए जहर हो सकता है, एंड वाइस वर्सा. ओके, सो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल. पहली बात तो हम क्या इतना फूड मिक्स करते हैं ना, कि हमें अगर कोई इनटॉलरेंस हो तो हमें पता ही नहीं चलता किस कारण से हो रहा है. So there is one test that I suggest to all my personal clients. I'll just type in the chat box, but please don't send the reports to me randomly, because people just keep sending me reports randomly. Manish, क्या करना चाहिए? It's a 6 month process actually to know which foods. So there's a food known as a food intolerance test, which is very common in the US. This I learned from my course at IIN. So every human being should do this once, and once in every 10 years हमें करना चाहिए, because our intolerances keep changing also. सो एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, करा लीजिए. उसमें सर्टन आइटम्स आएंगे इन रेड कैटेगरी, सर्टन इन येलो कैटेगरी एंड सर्टन इन ग्रीन कैटेगरी, ऐसा आता है. ओके, बिकॉज हम यूनिक है. तो किसी को हो सकता है कुछ एलर्जी हो, किसी को कुछ इंटॉलरेंस हो, किसी को कुछ हो. मिल्क सबको आया है, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मैंने आज तक जितने क्लाइंट्स का मेरा कराया है, मेरे फैमिली, मिल्क सबका कॉमन आता है. दैट्स अ वेरी कॉमन. ग्लूटेन इज अ वेरी कॉमन एलर्जन. पीस, पोटैटो, नट्स, दीज आर वेरी वेरी कॉमन एलर्जन, सब में होता है. तो बेसिकली समझ जाइए, ये सब खाना हमारे लिए बना नहीं है. एक्चुअली दीज आर नॉट फूड्स मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू कंज्यूम. जब सारे रिपोर्ट एक ही चीज बताते हैं, मतलब इट्स पॉइंट्स टू समथिंग. आप खुद का टेस्ट करिए, आपको समझ जाएगा. बट प्लीज डोंट स्टॉप एवरीथिंग ऑन डे वन. अब उसके लिए मैं टेस्ट बताना नहीं चाहता हूँ लोगों को. लोग गलतियां क्या करेंगे, 20 आइटम आया, सब कुछ स्टॉप कर देंगे, एंड दे स्ट्रगल एंड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाते हैं. तो यू एक्चुअली नीड टू गो ऑन एलिमिनेशन डाइट and then figure out, but do it with a health coach, do it with a registered practitioner. किसी भी एरे गिरे के मत करिएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, गए काम से. एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा, पीपीटी में डालना भूल गया मैं, विटामिन D3 एंड B12, चेक दैट एटलीस्ट वंस अ ईयर. नॉर्मल है तो भी चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर टू थिंग्स यू डोंट गेट फ्रॉम नेचर नाउ. बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि पानी हम जो पी रहे हैं वो फिल्टर्ड वाटर आ रहा है. यू आर नॉट ईटिंग फूड डायरेक्टली, ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द लेक्स, जहाँ से B12 मिलता था हमें. एंड सनलाइट, ऑब्वियसली ये पता है कि हम कितना सन में समय बिताते हैं. यू एक्चुअली हैव टू सिट नेकेड इन सन टू गेट दैट विटामिन D. सो दीज टू सप्लीमेंटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर डेफिशिएंट सप्लीमेंट, उसका भी कितना डोसेज होता है मैं आपको हिंट दूंगा एक्चुअली. बट अगेन, go to a health coach or a doctor to get your prescription. इट्स सो, बहुत दुख होता है मुझे. मेरे स्टूडेंट्स जो 2-3 साल से हैं, उनका विटामिन डी टेस्ट कराता हूँ, 10, 15, 20 ऐसा आता है. मैं बोला क्या फायदा मेरी क्लास में आके, अगर आपका विटामिन डी लो. इट्स फूलिश. इट्स फूलिश दैट यू आर विद अ हेल्थ कोच फॉर 2-2.5 years एंड स्टिल योर विटामिन डी, योर फैमिली मेंबर्स आर लो. मैं मेरे सब बच्चों को सप्लीमेंट करता हूँ, मेरे कुक को भी देता हूँ, मेरे जो घर में साफ सफाई करता है उसको भी देता हूँ, वो भी तो इंसान है. इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन D3 एंड B12. आई टेस्ट देम ऑल्सो.
I maintain a certain range जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. I'll tell you at the end of the class, so stay till the end. This is a trick I learned from YouTube कि कुछ चीजें लास्ट के लिए बचा के रखो तो लोग सुनते हैं सब. Just kidding. Okay, so note down, check करिए, check नहीं किया होता. And please don't send reports to me randomly. It's very difficult because D3 कई बार supplementation के बाद भी कम आता है. मनीष क्या करना चाहिए? It's practically not possible for me to treat on WhatsApp and phone call. You have to like work systematically, and over a period of 6 months we are able to go to the root cause that why your D3 is normal in spite of supplementation sometimes. So honor your bio individuality, very very important. And last, beware of food priming. This is something new. Food priming is everywhere. ओके, तो जैसे गोविंदा का गाना खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लड़की पटा रहा था, हर जगह तो खाना है. ओके, यू गो टू अ सिनेमा हॉल जाते पिक्चर देखने के लिए, बट एक पॉपकॉर्न तो हमें साथ में चाहिए. ये नहीं सोचते कि 1 घंटा पहले हम खाना खा के घर से आए हैं, बट पॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक तो होना ही चाहिए यार, ऐसा थोड़ी चलेगा. We have been primed to believe that you have to eat everywhere. So what is food priming? This is a technique that is used by food marketing companies to alter consumer choices through advertisements, aromas, brand ambassadors, and sample distribution. So कौन सा ऐड था ना, ये शाहरुख खान एंड नाउ अक्षय कुमार भी उसका ब्रांड, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बन गया. कौन सा पसंद, कमला पसंद पान मसाले, कौन कौन सा है, विमल, विमल आई थिंक, विमल. हाँ, कितना कूल लगता है यार, दिस शाहरुख खान एंड दिस थिंग अनदर, दैट एक्टर कौन है शाहरुख खान के साथ में, व्हिच देयर, या वन मोर एक्टर इज अजय देयर, देवगन. अजय देवगन. यस, एकदम प्राउडली खाता है. क्या वो अपने बच्चों को विमल देता होगा? अजय उसको पूछना चाहिए, एटलीस्ट उसको पूछना चाहिए वो अब्राम को दे रहा है क्या? अब्राम जो उसका बच्चा है शाहरुख खान का, डज ही ईट दैट विमल पान मसाला? क्यों हमारे बच्चों को आप सिखा रहे हो आप ये? People learn from this. Pepsi, it's so cool to drink a cola and Pepsi. All the cricketers, bullshit, they are earning in crores and thousands of crores now. Not even crores, hundreds and thousands of crores they are getting from one IPL contract, and still they are running after money and sponsoring these things. अपने बच्चों को आप दोगे तो हमें दो यार. रूल बना देना चाहिए कि शाहरुख खान का बच्चा वो खा रहा है तो हम खाए वो. पर समझना नहीं किसी को कि क्या हो रहा है. What are we doing? मतलब कि on which direction our society is heading? We don't even think that there are no morals, nothing. लोग पैसे के लिए कुछ भी कर बैठेंगे. They can even sell their conscience for money. So this is food priming, which is used by food marketing companies. And your social circle, somebody said at the start, social circle matters a lot. So if your friends eat junk food, you are more likely to eat junk food. If your friends are obese, you are more likely to be obese. That is why संगत जो है इतना इंपॉर्टेंट होता है. कई लोग मेरी क्लासेस में आते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं. अरे मनीष, मैं 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा. Like, you're doing such a big loss to yourself, because just being in the group, seeing so many good food photographs coming, देख के ही मन चलता है. किसी इसका मन चला. Yesterday we had this fruit diet day, and you had all the food photos coming in. How many of you felt motivated to eat more fruits after seeing? Yeah. And suppose you are a part of a group where everybody was eating junk. Everybody was eating, putting photos of samosas and French fries and cold drinks and chocolates and ice creams. आप क्या ज्यादा खाओगे? Obviously आप जो देखोगे आप वो खाओगे. So be a part of a community. जो बोलते हैं ना, we have such a, I'm so proud to build this community over the last 2.5 years, that we are 40 of us determined to take charge of our lives, and we motivate each other every day. For the last 2 years, we are motivating by some food photo or the, motivating each other to exercise, motivating each other to move, motivating each other to sleep on time, think the right thoughts, reprogram subconscious. क्या हो रहा है? Don't do this mistake. I know many people are here who are not with me anymore. This is not a marketing I'm doing. I'm not like hungry for more students and more money. Everybody knows why I'm doing this. But ये नहीं, और कोई कम्युनिटी ढूंढ लीजिए. बहुत सारे अच्छे अच्छे कम्युनिटीज हैं. बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. इट डज हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक. मैं गारंटी देता हूँ, जो मेरे साथ 2 साल से 6 महीना मेरे साथ मत रहिए, यू विल गो बैक टू, या किसी अच्छे ग्रुप के साथ मत रहिए, यू विल गो बैक टू योर ओल्ड वेज. सोशल सर्कल मैटर्स अ लॉट. And last in food priming is cultural impact. That the way we have been brought up since childhood, that determines our food choices subconsciously. कहीं ना कहीं that हमें बचपन से सिखा दिया कि ये खाना नॉर्मल है. So just go back to yourself. The questions that we did at the start, that what does food mean to you? क्या क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको स्टार्ट में? I'll just go back to that. I'll again go back to that. Just a second. 4 question. That is it because of food priming that our definition of food has changed?
Is it because of food priming that we don't know why we are eating? Is it because of food priming that we are eating foods which are not real? You will get your answers. I don't need to provide the answers to you. आपको अपने आप आपका आंसर पता चल जाएगा कि हम क्यों ये कर रहे हैं, why we are behaving in this way, that in spite of knowing that this food is bad for us, सबको पता है यहाँ पर. I don't need to like take a class to tell you that alcohol is bad for you, smoking is bad for you, sugar is bad for you, junk food is bad for you, pizza is bad for you, burger is bad for you, मिठाई is bad for you, malai is bad for you. सबको पता है उसमें saturated fat है. Butter is bad, pav bhaji is bad, refined maida is bad. क्यों हम खाते हैं? Why are we eating that? You will get the answer. सोचिएगा मगर you need to think it. There is no magic pill. There is nothing unless you think for yourself that what is important for you. Nothing is going to happen. And the last concept that I want to cover today is when you eat. So there is a saying that your body either heals or it digests. या तो वो healing करेगा या वो digest करेगा. And repair happens only when the engine is turned off. Now suppose your कार को सर्विसिंग करनी है. Okay, you send to a service station. So does the mechanic repair the car when it is turned on, or does he repair the car when it is turned off? Turned off. I can read the lips of many of you. Turned off. Similarly, our bodies are an innate healing mechanism. Okay, हमारा शरीर ठीक होना जानता है, बट उसके लिए क्या जरूरी है? It should be not in digestion or assimilation mode. जो हमने सीखा, ingestion, digestion, assimilation and excretion. Your stomach should actually be empty if you want to heal yourself. So that's why I strongly suggest everybody have your dinner latest by 5 or 6, so that 4-5 घंटे में जब हम 10-11 बजे सोते हैं तब तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो जावे. एंड हीलिंग हैपेंस व्हेन यू स्लीप. अंडरस्टैंड द लॉजिक. अगर आपका इंजन टर्न्ड ऑन है, मतलब अगर आप फूड बार पर खाली डाइजेस्ट करें तो हीलिंग कब होगा आपका? Sleep is meant to heal. It's a repair mechanism, but that repair is getting impaired because of wrong timing of eating. So खाना कब खाना चाहिए, ये बहुत important है. So there is a modern term which is known as intermittent fasting, and it is not a fad. We have been actually doing this for centuries. Okay, centuries and generations all together, we have been doing that. So when there was no electricity, people used to stop eating after sunset. And we were not that rich that we had all this fridge and we had all this convenience food. There was no Zomato and Swiggy hundreds of years ago. So सुबह उठ के कुछ मेहनत करते लोग, खेत में जाते, काम करते and उसके बाद ही खाना खाते. तो actually there should be a good gap between the last meal of your day and the first meal of the next day, जिसको एक मॉडर्न टर्म दे दिया गया इंटरमिटेंट फास्टिंग. एंड पीपल इन द वेस्ट आर मिंटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ दिस आल्सो, व्हिच इज अ वेरी नेचुरल पैटर्न ऑफ ईटिंग. सो द शॉर्टर द विंडो, the longer the healing time that you will get. Okay, so ideally शाम को 6 बजे तक खाना खा लीजिए. अगले दिन 10 के पहले आप कुछ मत खाइए. क्या खा सकते हैं जो आपका कैलोरी स्पाइक नहीं करे, जो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करे? यू कैन हैव वाटर, अनलिमिटेड वाटर. यू कैन हैव हर्बल टीज, ग्रीन टीज, वो सब चलेगा आपका. एंड थर्ड इज लेमन वाटर. Technically you can have coffee, technically you can have MCT oil, but my goal is not just not having insulin spike. My goal is longevity. So a lot of caffeine is bad for your brain. Oil obviously not recommended at all. Okay, so don't go as per textbook standards. If you want to thrive, topic kya tha mera? How to eat in order to thrive. So stick to these three things. You will be good to go. I've been doing this for years now. कोई कमजोरी नहीं है. एनर्जी लेवल्स क्लास में सब देखते ही हैं. I haven't missed a single class in the last 16 months. I take 4 to 5 classes and additional sessions तो अलग होते हैं, ऐसे जैसे आज हुआ. And look at my energy levels. No cold cough, no thing. I'm traveling in and out sometimes 2 to 3 times in a month. But I'm able to like maintain my protocol, maintain my diet, and the result is in front of you. That I'm 41 now. And normally when people look at me, they guess my age is I'm in 20s. लोग ऐसा बोलते हैं. You don't look like 41. Actually, my aging is reversing. So I'm following a program by Deepak Chopra. And there was a book called Grow Younger, Live Longer. It's a very technical book, not very easy read. But आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. So I've been following that for the past 15 years, and my aging has literally stopped. So I'm actually following this protocol for a long time.
ओके, सो टाइम फॉर एक्शन नाउ। चलो बहुत ज्ञान दे दिया, टाइम फॉर एक्शन। व्हाट कैन आई डू राइट अवे? मैं अभी से क्या कर सकता हूँ? चलो, कीप ऑल जंक फूड, जितना भी घर में कचरा है ना, कचरा मतलब बिस्किट्स, चिप्स, मिल्क, अंडा, उसको एक क्लोजेट में डाल दीजिए, उस पर एक हॉस्पिटल की पिक्चर चिपका दीजिए आप, कि अगर हॉस्पिटल जाना है तो ये सब खाना खाओ, तेल, शक्कर, नमक, ये सब उसको उसमें डाल दीजिए आप। See, salt, if you want to add in food, add rock salt, add Himalayan pink salt, that is fine in small quantities. But please don't use that iodized refined salt, that is not good. तो जंक फूड को, मैगी को सब उसमें डाल दीजिए, एंड जब भी आपका मन भी चलेगा ना खाने का, वो हॉस्पिटल की फोटो देख के आपका मन नहीं करेगा उसको खाने का। नेक्स्ट इट स्टार्ट नेमिंग फूड्स बाय इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड कंटेंट। सो लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम। सो अगर बर्थडे में हम जो काटते हैं, जो गोल गोल होता है, उसको क्या बोलते हैं? केक, केक। उसको केक बोलना बंद कर दीजिए। व्हाट इज केक मेड ऑफ नॉर्मली? मैदा, ऑयल, मैदा, ऑयल, और क्या जाता है मैदा, उसमें? ऑयल, शुगर, शुगर। शुगर। यस। चलो, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं मैदा, तेल और शक्कर काटूंगी, कोई भी खाएगा वो? हम्म, हम्म। चाय के साथ क्या लेते हैं सुबह सुबह नॉर्मली इंडिया में? बिस्किट्स, बिस्किट। उसको रस, बिस्किट तो नाम दे दिया गया है, तो बिस्किट्स बिस्किट एंड क्या चीज का रस। बना हुआ होता है? मैदा, ऑयल, शुगर, Oil, salt, sugar. ठीक है ना? तो मैं मेरे बच्चे को है ना, सुबह दूध के साथ मैदा, तेल और शक्कर दे रही हूँ, कोई भी खाएगा कभी? भुजिया, चले, बहुत कॉमन है हमारे मारवाड़ीज में, तो बहुत कॉमन है, भुजिया तो चाहिए यार, भुजिया के बिना खाना होता है? तो भुजिया से क्या, व्हाट बैगेज डू यू गेट आफ्टर भुजिया? चलो, नॉट रीड अबाउट नेक्स्ट न्यू पीपल आई वांट, या विभूति हो अनम्यूटेड। चलो, आप एक फ्राइड मस्त फ्रेंच फ्राइज या भुजिया खा रहे हो। भुजिया अगर सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है ये, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं आज के दिन। क्या आता है भुजिया, क्या होता है? चलो, कौन बताएगा? व्हाट इज भुजिया मेड ऑफ? Refined सबके चेक। oil, salt. You're getting salt, you're getting oil, saturated fat, you're getting heart attack, you are getting cancer, वो सब आ रहा है उससे हमें, अगर वो सब हम खा रहे हैं। नेक्स्ट इज पिज्जा, खुशियों की होम डिलीवरी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो खुशी डिलीवर करता है हमारे घर में। तो व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दैट पिज्जा? क्या चीज का बना होता है वो? मैदा। आई डोंट नीड टू गोइंग टू डिटेल, आई डोंट गोइंग टू डिटेल, एवरीबॉडी नोज, मैदा, चीज, और इट्स लाइक, मेरे एक फ्रेंड का है, मेरा एक, मैं भी गुजरात में हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने 2 साल पहले स्टार्ट किया ये अपना पिज्जा आउटलेट। आई वाज अ बिग पिज्जा लवर, ओके, एंड ही स्टार्टेड अ पिज्जा आउटलेट सिमिलर टू डोमिनोज, पेडिटो करके है, गुजरात में बहुत फेमस है। एंड द डे ही स्टार्टेड आई टर्न वीगन। मैंने बोला क्या घड़ी में चालू किया है? आई टर्न, बिकॉज आई न्यू एंड आई वेंट टू हिज किचन वंस, ओके, बिकॉज उसका खुद का है, तो मुझे दिखाया, मनीष भाई देखो मैंने ये पिज्जा आउटलेट खोला है, देखो कितना मस्त है, ऐसा है वैसा है। जो उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं मालूम है, दोज आर फ्रोजन। जो टॉपिंग्स होते हैं ना, कि हम पिज्जा को, लोग क्या बोलते हैं, पिज्जा को हेल्दी बनाते हैं, कैसे हेल्दी बनाए भैया? बोलते हैं हम उसमें देखो ना कितने वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, वो वेजिटेबल्स कटे होते हैं एटलीस्ट महीना 2 महीना पहले, बिकॉज वो भी उनको खुद नहीं, उनको काटना पड़ता है, कटे हुए आते हैं, फ्रोजन आते हैं, विच आर वीक्स एंड मंथ्स इन एडवांस। चीज भी जो आता है, ये मत सोचिए कि फ्रेश चीज वो आपको घस के दे रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट दे यूज, वंस यू गो इनटू द एक्चुअल किचन एंड सी, जो आपको दिखाया जाता है ना कि अच्छा खासा हम पिज्जा बना रहे हैं, देखो कितना ये है, actually when you see the oil that they put in the dough, you will never eat that in your life. That was the last day in my life that I had a garlic bread or a pizza, because I was a big fan of pizza, but I have my pizza now, जो मैंने आपको फोटो दिखाया शरण में जो हम बनाते हैं, I have it, I have the healthy version of that, it is more tastier than that. तो खाने के पहले उसको आप नेम कर दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, यू विल नेवर टच एनी जंक फूड इन योर लाइफ। इट्स लाइक, वे कोई हमें सिखाता नहीं ये सब चीज यार, ये कितना इजी है हेल्दी चॉइसेस करना। हेल्दी चॉइसेस इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड समवन टू टीच यू। बाय सीजनल एंड लोकली ग्रोन फ्रेश प्रोड्यूस, ईट अ रेनबो, okay, so people come to me, Manish, from where will I get my protein? Manish, from where will I get my vitamins? मुझे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? Is there any other animal on this planet that worries about his protein and calcium and vitamins and minerals and omega 3 and omega 6? And सब सीख गए हैं, सब आजकल डॉक्टर बन गए। I want this, that's why I'm having fish oil. Okay, I'm having this because my calcium requirements are so many milligrams per day. मैंने ये YouTube पे देखा था, मैंने ये शॉर्ट्स में देखा था कि 1 ग्राम पर बॉडी वेट तो मुझे प्रोटीन चाहिए। चलो, ओके, सिंपल है, स्टॉप एवरीथिंग, ईट अ रेनबो, यू विल गेट एवरीथिंग। सो ऐड कलर्स टू योर डाइट। जितना ज्यादा रंगीन चीज खाएंगे, भगवान ने सब बनाया उसके अंदर। आई एम मैं जब भी पास्ट में है ना रॉ वीगन डाइट पे गया हूँ, आई हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट।
I've never needed any protein supplements, any protein powders. I climbed the highest mountain peak in Gujarat on a raw vegan diet. It was in 2021. 3 months I was on raw vegan. I climbed without any soreness, and all my Guju friends that were there, that were drinking chas every day and those theplas and everything, अगले दिन सब पस्त हो गए because it was very steep, 6,000 steps, and I was taking my class next day also without any pain, without any soreness. So foods have, whole foods have protein, they have carbohydrates, they have fats, they have omega 3s, सब कुछ है हमारे खाने में, पर हमें पता नहीं है कि हमें सही कॉम्बिनेशन सेट कर कैसे करना है. उसके लिए सीखिए आप, लर्न. तो ईट अ रेनबो, इट्स a very easy way. Add colors to your diet. Okay, eat at least 50% raw. बहुत जरूरी है raw food हमारे खाने में होना, because raw food are living foods. So ideally, if you want to get into the blue zone, then 80% होना चाहिए, but starters के लिए 50% is good enough. Start your day with a green smoothie, fruits, I covered that. Eat only up to 80% of your capacity. दबा के नहीं खाना है. पेट हमारा छोटा सा होता है, दबा के खाओगे टेस्ट के लिए, out of habit and बहानाबाजी, you will suffer all your life. So eat only up to 80% of your capacity. And last, eat with all your senses and with gratitude. खाते वक्त मोबाइल, टीवी, बात करना, चलते फिरते खा लिया, ऐसा मत करिए. सब बोलते हैं ना, फूड इज ऑन अवर टेबल, सो मेनी फैक्टर्स, इतने इतने चीज साथ में आते हैं, सन, एयर, वाटर, सनलाइट, दिस थिंग, फार्मर इतना मेहनत करता है, देयर इज सो मेनी थिंग्स इन द फूड चेन गोइंग ऑन, एंड देन द फूड कम्स ऑन योर टेबल. एटलीस्ट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर इट. अरे समय नहीं मिलता खाने का, मनीष, भागा भागी में खाते. अरे काम क्यों करते हो इतना यार, अगर 10 मिनट भी खाने के लिए नहीं आपके शांति से. सो सिट इन मेडिटेशन फॉर अ वाइल. हम जो मुद्रा लेते हैं, वायु मुद्रा जो सीखा है जिन्होंने, कुछ मुद्रा लीजिए, रिलैक्स करिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करिए पहले, बिकॉज हम खा सकते हैं, डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते, बट वी कैन असिस्ट इन डाइजेशन. खाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करिए, निस्पंद भाव या वज्रासन जो हम करते हैं क्लास में, आप ऐसे बैठिए आप, तो you will be better able to assimilate, get the best bang for your buck if you eat with all your senses and with gratitude. So who will live longer? I'll give you two hypothetical scenarios now. Okay, so there is person A, left side mein, who is overweight, obese, gets energy from empty calories, who is sedentary, who sleeps late, addicted to substances like alcohol, cigarette, कभी कभी चलता है थोड़ा वाइन, थोड़ा बियर चलता है, उस टाइप के, एक टुकड़ा मेंटेलिटी की, एक टुकड़ा चलता है. And their metabolic markers like BP, diabetes, cholesterol, overweight, waist circumference, वो high है. Or will a person be live longer who is normal weight, who gets energy from whole food sources, who moves daily, exercises, sleeps by 10 p.m., who doesn't have any addiction, and whose metabolic markers are in functional range? Think about yourself. You are in which category? आप कौन से category में? And what is the probability of your who will live longer? So what do you think? Person A or person B, who will live longer? Anybody here who believes person A will live longer? ऐसा कोई है यहाँ पर अभी भी जो अभी तक कन्विंस नहीं हुआ? ओके, सो जस्ट सी, दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो हमें ठीक करना है. क्या क्या इंक्लूड किया मैंने? फूड, खाना, स्लीप, एक्सरसाइज, सिंपल सिंपल चीजें, थोड़ा माइंडफुलनेस, थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सब करिए, हो गया, सिंपल है. हेल्दी लिविंग इज मेड कॉम्प्लिकेटेड फॉर बिजनेस, और कुछ नहीं है. अपना बिजनेस कैसे बनेगा लोगों का? एंड लास्ट में मैं खाली एक चीज कवर कर रहा हूँ, दिस इज वेरी टेक्निकल, बट देर इज अ डिस्क्लेमर. Please don't become your own doctor. Okay, so this we are taught in our functional medicine practice. So मेरा last वाला point देखिए, metabolic markers in functional range. So anybody here who is a doctor or ये, what is the normal level of blood sugar जो होना चाहिए fasting, क्या होना चाहिए? Come on, 80 everybody. 120. Sorry, 80 120. no, this is not the normal range. किसी को पता है नॉर्मल रेंज क्या होता है? एज पर कन्वेंशनल मेडिसिन, एज पर डॉक्टर्स, कितना होना चाहिए ब्लड शुगर? कम ऑन, it is between 65 and 99. Okay, but the functional range जो बोलते हैं, if you want to live a long life, it's a very short, very compressed range. It is 70 to 86. ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आप ब्लड टेस्ट देखेंगे, इट इज, बोलते हैं डॉक्टर्स बोलते हैं बिलो 150 होना चाहिए. बट सी, ये जो एवरेजेस जो होते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट में देखते हो एवरेजेस, मालूम है कैसे निकलता है? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया हाउ डू यू गेट दिस एवरेजेस? आई जस्ट टेक 5 more minutes of yours and then we are done. Who determines these averages, that this blood sugar is normal, this
is normal. It is based on the average of human population. Okay, so if your blood sugar is above 100, then maybe you will start showing symptoms, or a majority of population start showing symptoms. तो उन्होंने determine किया कि fasting blood sugar अगर 100 के ऊपर है तो you are pre-diabetic, and अगर 130 140 के ऊपर है तो you are termed as diabetic, right? Who told that ESR अगर 20 तक है तो you don't have inflammation? Who made this markers? Humans made this markers based on the average of the population. Now my question to you is, do you want to base your average on the basis of a sick population, because entire world is sick? So I'm going to tell you some functional ranges, but again a strong disclaimer, कोई भी दवाई अपना बंद नहीं करेगा, कोई भी सप्लीमेंटेशन चालू नहीं करेगा बिना डॉक्टर को पूछे, बिना कोई सर्टिफाइड हेल्थ कोच को पूछे। मैं बताना नहीं चाहता हूँ ये सब, बट सिंस आउट ऑफ माय लव एंड अफेक्शन फॉर यू आई एम टेलिंग दिस कि हमें थ्राइव करने के लिए कौन से रेंज में रहना चाहिए। आई विल कवर अ वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट मार्कर्स टुडे। आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस और नॉट, बट चलो कर लेते हैं, आप सोच लिया है तो, because people sometimes misuse this. I've given disclaimer twice, and please don't send me your blood reports on WhatsApp. I don't reply कि normal range है कि नहीं, because WhatsApp से treatment कैसे होगा बताओ ना यार, because people just after the class reports keep pouring in. Okay, see, so fasting blood sugar first line, conventional range जो doctors बोलते हैं 65 to 99, but actually it should be between 70 to 86 milligrams per deciliter. ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं 120/80 नॉर्मल है, बट इफ यू वांट टू थ्राइव इट शुड बी 110/70. पल्स रेट 60 to 100, सॉरी इट्स नॉट 10, इट्स अ टाइपिंग एरर। 60 to 100 जो नॉर्मल माना जाता है, बट इफ यू वांट टू स्टे इन द फंक्शनल थ्राइविंग रेंज इट शुड बी बिटवीन 60 and 70. फास्टिंग इंसुलिन विच इज अ मार्कर फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो ब्लड टेस्ट बोलता है 3 से 24 नॉर्मल है, एंड 20 वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें रेजिस्टेंस नहीं है। इफ इट इज अबव 8 फास्टिंग इंसुलिन, देन इट इज, मैंने यूनिट्स लेफ्ट में लिखा है, ओके, यूनिट्स भी होता है बिकॉज डिफरेंट लैब्स यूज डिफरेंट यूनिट्स, सो बी माइंडफुल ऑफ दोज आल्सो। इफ इट इज अबव 8 देन यूर इंसुलिन रेजिस्टेंट। विटामिन डी 30 से 50 नॉर्मल माना जाता है, बट हम मानते हैं फंक्शनल मेडिसिन में 45 to 80. Vitamin D is that important, and don't worry about toxicity. Toxicity happens above 100. Okay, so अगर 70 भी है तो you need to supplement, ऐसा stop मत कर दीजिए अपना। Okay, HbA1c which is the average of 3 months of blood sugar, normally मानते हैं below 5.7 होना चाहिए, actually should be below 5.4. And triglyceride which is the marker of cholesterol, जो डॉक्टर्स बोलते हैं 150 नॉर्मल है, absolutely not, below 100. So I'll end with a quote that subconsciously we as a society have associated junk food with reward and celebration. कि कोई भी फेस्टिवल तो बिना जंक फूड के बन ही नहीं सकता। रक्षाबंधन है तो बहन भाई के लिए कितने प्यार से मिठाई लाती है, मेरा भैया मेरी रक्षा करेगा, अरे जिंदा रहेगा तो रक्षा करेगा ना आपकी, उसको आप खुद मार रहे हो, सब तलावा खाना देके मिठाई देके सब कुछ कर रहे हैं। दिवाली है, दिवाली में तो कढ़ाई की पूड़ी बनेगी, अरे इसके बिना सेलिब्रेशन थोड़ी होता है। श्राद्ध है, हमारे पूर्वजों को ये पसंद था तो हमें तो खीर आज खाना ही है, पूड़ी खाना ही है, पाप लगेगा। प्रसाद को ठुकरा दिया, डराया जाता है हमें पाठ के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू, कि आपने अगर प्रसाद को ठुकरा दिया तो पाप लगेगा। इंसान मरता आदमी भी डर से खा लेगा, वो डायबिटीज वाला भी मिठाई उस दिन खा लेता है कि पाप लगेगा मुझे। कौन बनाया ये सब? क्या हमारे भगवान इतने कमजोर हैं कि हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा जंक फूड खा के कि भगवान मैं तेरी भक्ति करता हूँ? सोचते ही नहीं हम। वी हैव बिकम लाइक, बोलते हैं ना दैट पैवलोलियन, क्या बोलते हैं ना, पैवलोलियन सम रिफ्लेक्सेस, कि बस सिखा दिया गया उस तरह से हम जी रहे हैं। बस ये कुत्ता था जिसको बार बार घंटी बजने पे खाना दिया जाता था, तो एक समय ऐसा आ गया कि घंटी बजने से ही उसका मुंह सैलिवेट होना चालू हो जाता था। वी हैव बिकम दैट वी डोंट थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, एंड व्हाट यू ईट इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो कोई पाप नहीं लगेगा अगर आप जंक फूड वो मिठाई ठुकराओगे, कोई पाप नहीं लगता है, डोंट वरी। नारियल का प्रसाद ले लीजिए, फल का प्रसाद ले लीजिए, बहुत कुछ है, ड्राई फ्रूट का प्रसाद ले लीजिए, वो सब प्रसाद रखिए। लेट्स चेंज द न्यू नॉर्मल। सो इतना बोलते हैं ना, हमने एसोसिएट कर लिया जंक फूड को शादियों, बर्थडेज, फेस्टिवल्स, मौत, जन्म, कुछ भी होता है तो जंक फूड तो सबसे पहले, वरना सेलिब्रेशन नहीं है। दैट वी हैव लाइक इक्वेटेड हेल्दी ईटिंग लाइक अ पनिशमेंट। कि सैलेड खाना बच्चों को पनिशमेंट क्यों लगता है आज? अरे सलाद खाने बोल दिया। हाँ, जैसे मैंने बोला मेरी डॉटर के बर्थडे में रखा था मैंने, उसके बाद से मैं भूल गया, मैं आई फॉरगॉट कि मैं अगर रखूंगा तो जूता खाने वाला हूँ मैं। इफ आई कीप एनी हेल्दी फूड, एंड आई डोंट ईट एट बर्थडेज, आई डोंट ईट एट मैरिजेस एट ऑल। मुझे मालूम है मेरा शरीर कितना वैल्यूएबल है, हाउ
precious I am for my family, how precious I am for my students, how precious I am for humanity. So the day you realize how precious you are, you start treating yourself differently. It's your life ultimately, and it all depends on the food that you eat. So important. So thank you very much. I'll stop here. I know it's a working day for most of you, and thank you very much for joining. I hope I was able to cover something new for my old students also and new people. Don't get overwhelmed with so much of information. Start taking baby steps. ओके, तो अगर आप दिन में 8 बार खाने की आदत है तो एक साथ 2 या 3 में मत आइए आप, यू विल फेल. इट्स अ रेसिपी फॉर फेलियर. एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. मैं तो सबको बोलता हूँ, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ और फॉर शरण और एनीवन. बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बहुत सारे की टेकअवेज आज दी हैं. स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस, गो डीप, आस्क योर दोस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर्स. सो आई एंड मोस्ट ऑफ माय सेशंस विद अ सॉन्ग. सो मनी लोग पूछते हैं, मनीष तुम क्यों कर रहे हो ये सब, यार तुम्हें क्या काम है ये सब करने का, यू हैव दिस ह्यूज बिजनेस एंड यू हैव दिस फैमिली एंड इतना सुखी वाला जीवन जी रहे थे, क्यों इस लाइन में घुस गए. आई वाज नॉट एक्चुअली हेल्थ कोच अर्लियर, जस्ट हेल्पिंग पीपल वन ऑन वन, कि चलो वन ऑन वन सबको हेल्प करते हैं. एंड देन लाइफ वांटेड मी टू बिकम अ टीचर एंड आई बिकेम अ टीचर, एंड ये सब हुआ बिकॉज आई एम स्लाइटली सेल्फिश ऑल्सो. ओके, सो ब्रह्मास्त्र पिक्चर जिन्होंने देखी है, रणबीर एंड अमिताभ वाली, तो उसमें अमिताभ बच्चन एक कम्युनिटी बनाता है एक लोगों की. अमिताभ बच्चन एक कम्युनिटी बनाते हैं लोगों की, कि जिनके पास सम स्पेशल पावर्स हैं उनके पास, एंड दे विल प्रोटेक्ट अर्थ, धरती की रक्षा करेंगे फ्रॉम डेविल्स. ओके, रणबीर कपूर के अंदर वो था पर उसको पता नहीं था, सो ही गोज टू हिज शाला एंड ही टीचेस. देखिए पिक्चर सबने, मतलब उसका ये था. तो मैं मानता हूँ कि हम इंसानों में भी एक स्पेशल, सब में एक शक्ति है, एंड वी हैव दिस ability to make this world a beautiful place to live in. So I'm bit selfish for myself also, for my children also, because मुझे मालूम है कि 20 साल बाद जो बीमार होंगे वो मेरे बच्चे होने वाले. ओके, तो मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर सब खुश रहना सीखें, सब हेल्दी हो. देयर आर नो हॉस्पिटल्स एट ऑल. हॉस्पिटल्स हो भी तो खाली बोलते हैं ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए नहीं हो एटलीस्ट, या डायबिटीज बीपी के लिए नहीं हो, कोई एक्सीडेंट्स कोई सर्जरीज कुछ करना हो तो खाली उसके लिए हो. ऐसी दुनिया हो जहाँ सब खुश रहना सीख जाए, everybody lives up to their full potential. So that is my dream, that I want to create a community of people who are like thriving always. जैसे कुछ भी हो, आउटर सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी हो, हम खुश रहना सीख गए. सो एक गाना मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ. या सर, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड कोइंसिडेंटली ये भी कोक का एड था. देखिए कैसे बेवकूफ बनाते हैं कोक. ओके, सो दिस वाज अ कोको कोला एडवर्टाइजमेंट, वहां से ये म्यूजिक क्लिप आया है. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू विल लव इट. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा. जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. तुम दिल से अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे. जब सच्चे मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें. तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. Beautiful song. Yeah, any questions anybody has quickly? I have time today because it's my day off at work. Anybody has any questions, anything to share, anything that was a revelation for you, you never thought of? It was a very different presentation from my. Yeah, Pooja, you want to share anything? So I think Karina has put a question in the chat box regarding milk. Okay. So what's the question? Karina, can you unmute yourself and ask, please, if she is there? Yeah, I think I So, was saying that you were talking about milk not being a natural, basically it being a non-vegetarian thing, and it just not humans are not made to consume milk. I was asking if that's applicable for non-vegetarian sources of milk, like oat milk or almond milk as well. no. See, No. by milk, I meant dairy there. Got it. Got it. Yeah, by dairy. Yeah, but plant-based sources are absolutely fine. If you want to have them in your diet, Yeah. yeah, it is absolutely fine. Yes. But Oh. see,
The definition of vegetarianism has been evolved over the years as per our convenience. Vegetarian में क्या यूज है? Vegetable, it comes from vegetable. ओके, कहाँ से दूध कहाँ से आ गया? गाय का दूध उसमें कहाँ से आ गया? वेजिटेरियन, इट्स नॉन वेजिटेरियन फूड, इट्स कमिंग फ्रॉम एनिमल सोर्स. उसके सारे बैक्टीरिया, हॉर्मोन्स, पस, बीमारी सब आपके अंदर आ रही है. आप सब हार्मोनल है, ऑक्सीटोसिन से पैदा किया गया दूध है, ये समझ जाइए क्या है वो. जहर है, जहर लिटरली. व्हाट्स द फंक्शनल रेंज फॉर B12? ओके, गुड क्वेश्चन, very intelligent question, I would say. I forgot to put that. Yeah, so it is above 500. So ideally between 500 and 900. I prefer to keep mine B12. I keep it super high because why? It's a water soluble vitamin, vitamin B12. सो नॉर्मली 400 आता है तो डॉक्टर बोलते नॉर्मल है. डॉक्टर तो 300 को भी नॉर्मल मानते हैं बिकॉज वो 200 से 900 के रेंज में. नो, इट नीड्स टू बी वेरी हाई. इनफैक्ट अगर थोड़ा रेंज के ऊपर भी भाग जाए तो डरने वाली बात नहीं है. B12 अगर एक्सेस होगा तो आपकी यूरिन के रास्ते निकल जाएगा. इट डजंट कॉज टॉक्सिसिटी. बट प्लीज डोंट बिकम योर ओन डॉक्टर. Does the value of B12 vary with gender? Even not with gender, even the same gender it varies. Because क्या होता है, सी लॉजिक बताता हूँ. लॉजिक सुनिए, आई हैव टाइम टुडे. इफ एनीबॉडी इज गेटिंग लेट यू कैन लीव. देखिए हमारा बॉडी जो है ना, सब चीज अलग तरीके से प्रोसेस करता है, सब चीज. सो इफ यू आर, सपोज देयर आर टू पीपल हियर, सपोज करीना एंड कीर्ति. ओके, आजू बाजू में उसके लिए नाम ले रहा हूँ उनका. बोथ आर हैविंग लेवल्स ऑफ विटामिन डी सपोज 20. बोथ गो टू डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला दोनों का सप्लीमेंटेशन लेना है एंड डॉक्टर ने एग्जैक्ट सेम डोसेज दोनों को दे दिया. दे गो टू डॉक्टर आफ्टर 6 months विद अ रिपोर्ट. करीना का नॉर्मल आ गया, 50 आ गया, बट कीर्ति स्टिल है 25. ऐसा भी होता है. So then you know need to go into, because body कैसे metabolize कर रहा है. It depends on your liver function, it depends on your kidney function, it depends on your gut, whether you have leaky gut, whether your gut bacteria is normal or not. लोग ये बात नहीं समझते. आग बंद करके सप्लीमेंटेशन चालू कर दिया, पूरी जिंदगी दवाई लेते रहेंगे, बोलेंगे यार मेरा तो नॉर्मल होता ही नहीं है. Yeah. So these are very technical things actually. That's why I say never become your own doctor. It's not worth it supplementation on your own. हमें वो डॉक्टर की कई बार फीस ज्यादा लगती है, 1000 2000, या हेल्थ कोचेस की फीस ज्यादा लगती है कि यार क्या फायदा जाके. नो, नेवर डू दिस मिस्टेक बिकॉज देर आर लॉट ऑफ को फैक्टर्स. सपोज विटामिन डी एग्जाम्पल ले लीजिए. तो इट्स अ फैट सोल्युबल विटामिन. अगर आपके खाने में हेल्दी फैट्स नहीं होगा तो यू विल बी नेवर एबल टू मेटाबोलाइज डी. You need magnesium in your diet if you want to. It's a cofactor for vitamin D. Your liver need to function properly if you want to convert that vitamin D into the consumable form. बहुत टेक्निकल बात है, हम लोग को डिटेल में सिखाया जाता है. उसके लिए मुझे भी लास्ट ईयर ही पता चला इतना, व्हेन आई डिड माय कोर्स एट कॉर्नेल एंड IIM, तभी मुझे इतना पता चला. बट वेरी गुड क्वेश्चन. या थैंक यू आनंद फॉर आस्किंग. इस सांबर मसाला. Manish, what? या Yeah, the BP range, it also varies. Like, या BP range, sorry, what's the question? yeah, what's the? Yeah, let me know. It's not in the chart. It's there, 110/70. It was there. I'll just share this. Everybody can take a photograph if you want. This I got from IIN. I'll just share it again. So BP, if you want to live long, it is 110/70. And since Ekta asked this question, मैं again बोलना चाहूंगा, over exercising is bad for you. Okay. So कई लोग सुबह मेरा क्लास करते हैं, शाम को कोई स्पोर्ट खेलते हैं, मेरा क्लास करते हैं, साथ में बहुत ब्रिस्क वॉक करते हैं. नेवर डू दैट. इफ यू एक्सरसाइज फॉर 45 minutes in a day एंड बाद में आप स्लो वॉक भी करेंगे तो काफी है. ज्यादा I एक्सरसाइज used करने से ज्यादा पतले नहीं होंगे आप. I ओके. used to go for walks every day for 1 hour. Okay. Oh. Either walk or exercise. Don't do both. No, I But do see, exercise as well as walk. Exercise in the morning, walk in the evening. see, slow walk is okay. Don't do brisk walk. I would say. Just reduce your pace. I know you get a high, you feel good, and brisk walking is good for you. But जैसे ज्यादा खाना खराब है, ज्यादा दवाई खराब है, वैसे ज्यादा exercising भी खराब है हमारे लिए. Okay. So see, what protocol I follow in my classes and in my health coaching is how I can enable you to live a long, healthy life. I don't want Hrithik Roshan's and Kareena Kapoor's of the world here. That I want six-pack abs and size 0 and everything, and you just look beautiful on the outside, but inside से हम खोखले हो जाएं, क्या फायदा? So I want you to be beautiful from the outside and the inside. That's my goal of my classes. That's why I'm like other days maybe I keep people guiding, motivating कि अब क्या करो नहीं करो.
आई एम लाइक सो मोटिवेटेड कि सोने के पहले क्या सोचो, उठने के बाद क्या सोचो. आई पुट अप मैसेजेस, मॉर्निंग मैसेजेस, इवनिंग मैसेजेस, बिकॉज आई नो हेल्थ इज नॉट जस्ट फूड. लाइक मुकेश सेड, इट इज मच मोर देन फूड एक्चुअली. बट आज हमने फूड पे फोकस किया. या थैंक यू एकता फॉर आस्किंग. इस पाव भाजी मसाला सांबर मसाला ये see this thing is like I'm not telling you to attain nirvana. Okay, so goal with me is not to attain that हमें साधु महात्मा बन जाना है, हम पूरा एकदम ब्लांड फूड खाएं, वो नहीं खाएं. बट बी माइंडफुल ऑफ पोर्शंस. ओके, बी माइंडफुल ऑफ पोर्शंस. टेक्निकली नॉट, बट ये स्मॉल पोर्शन मैं भी लेता हूँ. ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नमक छोड़ दिया एंड मैंने पूरा मसाला छोड़ दिया. बट इट इज वेरी लेस. इट इज वेरी लेस टू हेल्प मी स्टे इन दैट ऑप्टिमल फंक्शनल रेंज. ओके, सो हर मील में नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आप ऐसा नहीं कि हर मील पूरा मसाले से भरा पड़ा है, वैसा नहीं. लंच ले लिया, थोड़ा बहुत चलेगा वैसा. ओके, आउटसाइड फूड भी खाना है कभी, सपोज यू वांट टू ईट आउटसाइड, हमेशा घर का खाना पॉसिबल नहीं है. गो फॉर लंचेस रादर देन डिनर्स. ओके, एंड आउटसाइड फूड में भी वेरी केयरफुल ऑफ हैविंग. ऑयल फ्री बन जाता है. मैं तो जाता हूँ रेस्टोरेंट में, बोलता मुझे मिल्क एलर्जी है, तो ऑयल का एलर्जी है. बोला खाना कैसे बनेगा? एंड जस्ट एक्सप्लेन देम, आप ऐसे करो, उसको ऐसे रोस्ट करो, प्याज को रोस्ट करो, थोड़ा पीनट डाल दो, उसमें ग्रेवी बना दो. एंड दे आर सरप्राइज, सर बन भी गया. ओके, तो यू जस्ट टॉक टू देम. उनको बोलेंगे ना, सब काम होता है. यू हैव टू ट्रिक. कोई अभी मैं जैसे होटल में जाता हूँ, पहले दिन उनको टिप दे देता हूँ 500-1000 रुपया. तो वो तो मेरा एकदम आशिक बन जाता है, मेरे हिसाब से खाना बना देता है, बिना तेल, वीगन, होल फूड सब बन जाता है. होता सब कुछ है, नियत होनी चाहिए और कुछ नहीं. सब ट्रिक्स है ये सब करने के लिए. इफ यू आर डिटरमिन्ड ना, रास्ता अपने आप मिल जाता है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. इज टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सिबल? इफ इट्स फ्रॉम बर्थ देन नॉट, टेक्निकली नॉट, but it should not stop you from living your life to the fullest. Okay, I get people with autoimmune conditions, I get people with lupus, I get people with systemic sclerosis, I get people with arthritis, I get people with this. So I'll just take few more minutes since I have time. If anybody is getting late, please leave. चलेगा, या कैमरा बंद करके सुनते रहिए. ठीक होके करना क्या, ये कोई पूछता नहीं अपने आप को. क्या वो चीज हम इस बीमारी के साथ भी कर सकते हैं? Okay, because see, God has given us this for a reason, but that should not stop you from living your life to the fullest. So rather than making this disease reversal your goal, think about your purpose in life. तो मेरे पास कोई भी नया क्लाइंट आता है, सबसे पहले वाई पूछता हूँ मैं, वाई डू यू वांट टू गेट हेल्थ? And if you, unfortunately, if you have such a condition which cannot be reversed completely, my next question is, can you do this with this illness? If I can teach you certain ways to become so strong mentally, physically, emotionally, spiritually, that you are able to do everything that you wanted to do without this illness, is it okay? People don't think this way. Huh? तो मुझे आर्थराइटिस है. If you do my scans right now, it is showing ankylosing spondylitis. But my question is that stopping me from living my life to the fullest? सो मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया, इन्फ्लेमेशन डाउन कर लिया, सब कर लिया कि फर्दर डैमेज तो बंद हो गया, पर मेरा गर्दन अभी पूरा ऊंचा नहीं जाता. बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम लिविंग माय लाइफ टू द फुलेस्ट. सो ऑन पेपर आई हैव एएस spondylosis, but I'm living, I'm thriving. Yeah. So don't question life, don't question God, हमें ये क्यों मिला नहीं मिला. We don't question the good things, and why question this also. Accept yourself as you are and just keep working on yourself. At least जो हमारे हाथ में उतना तो हम सही करें. नेवर हैव दिस ऑल और नथिंग मेंटालिटी कि यार मुझे तो ये दे दिया, मेरे हाथ में क्या है यार, चलो जाना तो एक दिन उल्टा सीधा खा के जाओ. नेवर डू दैट. नेवर डू दैट. नेवर हैव दैट ऑल और नथिंग मेंटालिटी. इट्स आवर ड्यूटी to take care of yourself. Love yourself to the best. Every day love yourself. बोलते हैं जैसे भी हम हो. Nothing is, एक जापानीज में कॉन्सेप्ट है वाबी साबी, सुना है किसी ने? या वाबी साबी. या it talks about beauty in imperfections. So even if you have fingers like this, you are beautiful. Even you have any illness which God has given you, which is not out of choice, you are still perfect. अपने आप को उस नजरिए से आप देखिए. You will heal immediately. You are healed already because you are not letting that disease define you anymore. So I never call my patients. I call them either clients or affected or ऐसा भी. मुझे पेशेंट दिखता ही नहीं उसमें. मुझे तो बोलते हैं ना कि you see God in everyone. And when I look at you, I see God in you. And I know when God is there, when you connect with your true self, your consciousness, when you are not attached to your body anymore,
You're not attached to your mind. You're not attached to anything outside of you. By you means a consciousness. You become free. You become liberated. That you do what is in your hands and you let go of what is not in your hands. So people with any kind of diseases that you have from birth, don't question it. Start living your day. बोलते ना कि think about the best what I can do today and that's it. अपना आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा. So when you are in this body consciousness, हमेशा आपको तकलीफ होगी. But if you are in that soul consciousness, everything will disappear. That's why I guarantee that you come to me and guarantee मैं आपको ठीक कर दूंगा. थोड़ी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, थोड़ी I have this magic pill and आपका सब कुछ गायब हो गया. But yeah, pain may be there, some bit of stiffness may be there, some bit of like this will be there. But क्या नहीं रहेगा आपके लाइफ में? सफरिंग नहीं रहेगी आपके लाइफ में. So अगर कोई कारण से मेरे पास टाइप 1 डायबिटीज का क्योर आ जाए, but if you still suffer mentally, physically, is that good? Or staying with a diagnosis of type 1 diabetes, but I'm living my life to the fullest. I will anyways choose the second option. It's all in the mind. It's all in the mind, nothing else. That's why somebody said here, Valjeet Aunty, you're the architect of human mind. Yeah, we are taught how to like teach, but some things come from yoga. So I've done my training in yoga, Vedanta, many things I keep on doing now. I and Cornell also happened, and now next is functional medicine, and I want to like take it further to next level. So I'm also thinking of doing a functional medicine practitioner course. There are only around 4 or 5,000 in the world in all, and maybe I'll be next. So keep working on yourself, Karina. It's not very difficult. It's very easy. It's effortless. Yeah. Chaliye, any other questions? Yeah. No? Chalo. We'll meet tomorrow. We don't have any class tomorrow for my students, and we meet next on Thursday. Okay, Thursday हमारी class है. We are taking a break tomorrow. Tomorrow मतलब आज बैठे हैं सब, तो कल group में आ जाएगा what you have to do tomorrow. Okay? Or you can do something on your own also. I Yeah, did Geeta. I did my first full fruit diet yesterday. Very Oh. smoothly. Very, very smoothly. Just your passion that's rubbing off on me. And I would say same here. The energy of the group uplifts me to give my best always. Yeah. So this presentation was not planned. I will tell you the reality now. So I'm in Gujarat and our work is like in full swing. I didn't have time to prepare. कल मैंने सुबह सोचा कैंसिल कर देता हूँ. मैंने बोला यार ये आदत अच्छी नहीं है कैंसिल करने की. मैंने बोला कि लास्ट ईयर जो प्रेजेंटेशन था वही कर देता हूँ. I had the PPT that also, and that was completely different. मैंने बोला फिर इट इज लाइक इनजस्टिस टू ऑल स्टूडेंट्स जो 2 साल से मेरे साथ में, वो तो सब जानते हैं यार कि क्या क्या नहीं खाना क्या खाना. मतलब क्या नया क्या करें, मतलब समथिंग यूनिक. आई जस्ट क्लोज माय वर्क एट 6. आई स्टार्टेड माय पीपीटी एट 7:30 एंड हाउ ब्यूटीफुली द थॉट्स फ्लोड कि व्हाट इज फूड. मैंने सोचा अपने आप को यार कि व्हाई आर पीपल कमिंग हियर एंड थ्राइविंग कब करेंगे. एंड दैट क्वेश्चंस 4 questions got me thinking and the flow came. And by 9:30 it was over. And 9:30 10 I finished the presentation, and मॉर्निंग में थोड़ा मैंने फूड प्राइमिंग ऐड किया बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वेयर गीता आंटी बोले ना, व्हेन यू सरेंडर, बोलते ना व्हेन यू सरेंडर टू अ टीचर और यू सरेंडर टू योर गुरु और यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, दैट टेक्स ओवर. And see how beautiful you are feeling today and so light and everything because you are eating the most natural food for human beings. Thank you, Geeta aunty, for sharing. Thank you. Yeah, I would also Thank like you. to share. Yesterday, I also was on, yeah, till 4, you can say. I was on this thing, only fruits. But my children imposed me, no, mommy, you should take something, nahi cooked khao. So I really, like, no, मैंने खाया फिर उसके बाद. But I should have not done, but I had. लेकिन इतना तक किया. No, Pramant, it's all right. It's all right. Don't judge yourself for eating thing. बच्चे का प्यार है उसलिए वो बोले वो ठीक है. बट someday when they understand and what's the right diet for us. So मैं रोज नहीं बोलता हूँ फल खाने, वीक में एक बार तो खाओ एटलीस्ट यार. Yeah. रोज थोड़ा थोड़ा खाओ पर वीक में एक दिन खाने से डिटॉक्स हो जाता है पूरा बॉडी. बट वो आप इतना इंस्पायर करते हो कि सारा दिन आप हमारे माइंड में रहते हो. मेरे माइंड में तो रहते ही हो कुछ भी खाने से पहले. गलतियां तो बहुत करती हूँ मैं, बट स्टिल लाइक एक अवेयरनेस है. थैंक यू सो मच. लव यू. I also want to share the guidance of Manish. I also try to follow it
it is quite cold here in Delhi. Though I was like preparing hot food, rotis, pronti stuffed rotis for my family, but somehow I think it is all the mindset. So I was able to carry it till night. Yeah, at night I had dal. That's it. Otherwise, salad in the afternoon, and that's it with the herbal tea. But it was easy. It was not that difficult. Thank you. Thank you, Gurleen ji, for sharing. Yeah. See, goal is Yeah, I progress, was not able to do till evening. Then I had sambar and idli. no problem. See, never judge yourself for doing it. ठीक है, इंसान है, खा लिया यार, कौन सा कोई तीर मारना है, ऐसा कोई किसी को कुछ साबित करना है. डू ओनली इफ इट इज एफर्टलेस. मैं तो एक ही बोलता हूँ, एफर्टलेस हो तो करो. Yeah. Right. गीता आंटी है, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? Yeah, I think one benefit I experience is we are just two in the house. I eat early and my husband eats late. So there's no food on the table when I'm sitting with my food. So I don't have those temptations, the mind getting influenced by other foods. So that's why I'm able to do my. But I think that morning smoothie is amazing. It's been 2.5 years. Wherever I travel, I just have my smoothie or fruits. वो एकदम बैठ गया है. And salads. So ना बैठा it लीजिए. helps. जब हस्बैंड के साथ भी खाएंगे ना, अगर इफ अनफॉर्चुनेटली वी ईटिंग जंक, स्टार्ट नेमिंग द इंग्रेडिएंट्स. ओके. That's a बट new प्लीज, trick, yes. Yes, that's a new trick. Yeah. मन चलेगा ही नहीं आपका खाने का. दैट्स अ ब्रह्मास्त्र, उसके लिए मैंने डाला सुबह सुबह. ये तो Yes. हाउ कैन आई फॉरगेट दिस. या, कोई नहीं खाएगा वो. चलो, थैंक यू वेरी Yeah. मच. थैंक यू Thank गीता you. Thank आंटी. you. Yeah, Thank one you. last question, Manish, Thank I want to you. ask. Thank you. Do I need to take medicine already? I am taking, it's been like 4-5 months, my BP medicine. My BP is like 130, 80, maybe at times 140, 85, something like that. Due to doctor said due to hormonal changes. At Sharan, at least we believe that BP can be very easily reversed. Okay. So, do I need to take medicine? I'm taking 2.5 mg once in the morning. Very easily, very easily it can be reversed, but don't stop it on your own. Be under a some consultation at least. Okay, but तो I need शरण, to take अभी right या now. तो मेरे पास, आई हैव अ बीपी पेशेंट माई सेल्फ, मेरे प्राइवेट हेल्थ कोचिंग में था बिफोर आई जॉइन शरण. सो ही वाज टेकिंग, तो उसका डोसेज हाफ हो गया एंड स्टिल द बीपी इज नॉर्मल. एंड नाउ नेक्स्ट 3 months में हमारा गोल है कि उसको भी स्टॉप करना है. तो इट्स अ प्रोसेस, एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट ओवरनाइट कैन हैपन, बट प्लीज डोंट स्टॉप ऑन योर ओन, इट कैन बी वेरी डेंजरस. कभी It's खुद been स्टॉप, just 5 to 6 months only I've वेरी started. वेरी इजली 2-3 साल वाले रिवर्स हो गए. मैं बोलता हूँ शरण का पे कंसल्टेशन ले लो, डॉक्टर का नाम. सो देयर इज Okay, डॉक्टर आरती राठी. So she okay, specializes, she is a cardiologist and she okay, specializes in that. Yeah. okay. So And you maybe just share. क्लासेस के थ्रू मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ. मैं क्लासेस के थ्रू मैं Yeah, आपको, yeah, yeah. That I'm doing. Okay, that you follow. तो हेल्थ कोच की आपको जरूरत नहीं. You don't need a health coach actually, because group coaching में you are getting all the knowledge. okay. And just consult her and she will actually help you taper down your medications. You just share the number. I'll talk to her. I don't have a number. मैं नुपुर का नंबर दे दूंगा आपको. I'll put in the group. So anybody wants to consult any doctor or nutritionist with Sharan, you can call Nupur. Okay. What's the name of the doctor you said? Dr. Aarti Rathi. Dr. Aarti Rathi. Yeah. Okay. Because क्या होगा कि वेस्टर्न डॉक्टर्स ना आपको जिंदगी भर दवाई पे रखेंगे. यहाँ देयर इज अ गुड 90% चांस दैट योर मेडिकेशन विल स्टॉप. मैं तो 100% बोलता हूँ, बट ऐसे पब्लिक फोरम पे 100% बोलूंगा तो ये तो यार, ये ही इज अ क्वैक एंड ही इज दिस एंड दैट, बट एक्चुअली इट रिवर्सेस. अंशु का देखो ना, माय वाइफ, शी रिवर्स्ड हर दिस थिंग, थायराइड. शी इज नॉट ऑन मेडिकेशंस. स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सॉरी.